ताली होनी चाहिए, भरपूर ताली होनी चाहिए खातिनों हज़रात। Then we have Chair IEEE Lahore section, Dr. Shazib Rathore with us. A huge round of applause for Dr. Shazib, ladies and gentlemen. We have Khwaja Farooq Arshad. He is from GNS Solutions Private Limited. A huge round of applause for Khwaja Farooq Arshad Sahab. In a short while, Dr. Ayub Wali Sahab, who is the CEO of he's founder of Hospital Private Limited and Executive Director NetSol. He will be joining us shortly. So we'll commence the opening ceremony IEEE Lahore session in a short while. Hospital Private Limited and Executive Director NetSol. He will be joining us shortly. कितने लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में the opening ceremony IEEE Lahore session in a short while. Hospital Private Limited. कितने लोग ऐसे हैं जो आए हुए हैं और कितने ऐसे हैं जो लाए हुए हैं? आप ही लाए हुए हैं सर? तो मेरा ख्याल आए हुए ज्यादा है, तो ये तो अच्छी बात होती है कि आए हुए लोग ज्यादा हैं, तो आए हुए लोगों के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और जो लाए हुए हैं वो भी इंशाल्लाह कुछ देर में खुद को आया हुआ महसूस करने लगेंगे। तो थोड़ी सी सर्दी है उनकी है, इसका एहसास तभी जाता है जब जोरदार तालियां होती हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ताकि माहौल बन जाए। Ladies and gentlemen, ICOSST is basically a flagship event of Al-Khwarizmi Institute of Computer Science that happens every year. और हर साल की तरह इस साल भी ICOSST उसी ज़ील एंड ज़ेस्ट से और अयूब वाली साहब ने in the meanwhile अभी ज्वाइन कर लिया। I would request everybody to a huge round of applause for अयूब वाली साहब। भरपूर तालियां होनी चाहिए अयूब वाली साहब के लिए। He is Executive Director NetSol, ladies and gentlemen, CEO Hospital Private Limited. We welcome you, sir. And with this, I would request you, sir, to please join us on stage. Then I would request Pro Vice Chancellor Dr. Nasir Hayat Saab to please join us on stage, sir. I would request respected Dean Dr. Shahid Rafiq Saab to please join us on stage. I would request Shazib Rathore Saab to please come up on stage. Then I would request Khwaja Farooq Arshad Saab to please come on stage. Sir. So there you go, sir. And with your permission, sir. वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों में धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हो, रिदाए गुमरही कितनी ही मैली हो, दुखों की धूप फैली हो, उससे जिस वक्त और जिस हाल में जब भी कोई भी याद करता है वो सुनता है, बहुत ही मेहरबान रहम करता है, वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं। I would request Hafiz Usman Ahmed Saab to please come at the podium and recite few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. सभी तारीफें उसी खालिक ज़जल के लिए, सबूत झील को देता है जो कवल के लिए। बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब. So ladies and gentlemen, now rise for national anthem. पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, रोशनी और रंगों की लहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो। अगर आपके दिलों में पाकिस्तान धड़कता है तो ये नारा फजा में बुलंद होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। Honorable dignitaries, dear researchers and dear students, on behalf of Al-Khwarizmi Institute of Computer Science, I warmly welcome you all to 17th ICOSST 2023. Ladies and gentlemen, this is a flagship event of Al-Khwarizmi Institute of Computer Science that happens every year. This is such a diversified platform that here you would be witnessing keynote talks on various topics ranging from cybersecurity to the generative AI, the keynote speakers coming from Pakistan and from across the globe. Here you would be witnessing researchers, industrialists presenting their innovations, students participating, contesting under the banner of Brainiac. This happens every year. So these 2 days are going to be full of excitement. So what happened in the last ICOSST last year, 2022, let's have a quick look in the form of video, ladies and gentlemen.
there you go, ladies and gentlemen. Unfortunately, the dignitaries sitting over the stage couldn't have a look at this video. So मैंने IT से बात की, वो कहते हैं throughout the event आपको ये दिखाते रहेंगे. So हाकिम साहब आपकी तालियों पे मैं request करूँगा Director Kicks Dr. वकार महमूद साहब to please come at the podium for the welcome address. We have about 25 plus research labs in various areas of IT. And researchers not only work in local problem solving, but also they work compete internationally. We win funding internationally and solve problems and publish in relevant journals. The institute has been regarded as one of the pioneer research institutes in the country by independent study by British Council and Knowledge Platform. They have suggested that together with Al-Qazi for the Computer Sciences, there is one more organization, Unite, which has been providing funding to research in IT domain within the country for the last 15 to 20 years. These two organizations are shifting the paradigm of research within the university research culture in Pakistan.
artificial intelligence. It's the one which has been working with the safety authority and some other organizations within the country. We also have a National Center of Cybersecurity, the Institute Lab. We have a National Center for Data and Cloud Computing, and also robotics. And very new National Center in the area of cloud, in the area of quantum computing is going to be established very soon within the center. The conference itself, this time we received around 124 plus manuscripts, and after the peer review process, 36 papers were selected. So our technical program committee consists of 58 researchers from all across the world who have evaluated and then selected those top quality papers, which is about less than 30% of selection rate in this conference. We have two workshops arranged in this conference. One is going to be on bmnKY, and then we have another one on cybersecurity. We have an exhibition planned. There are research labs which are exhibiting their projects. Then we have industry also participating, local, and also those who are helping us out in the recruitment drive. And then we have invited talks locally and internationally. About 12 invited talks are present in this, available in this conference. Students are also going to be participating in their competitions. Brainiac is also flagship activity that happens with the help of the computer science department. And there are 4 contests which will be organized within this conference. Today we will start our activity after this opening session in the auditorium. In 2 rooms after we inaugurate the exhibition. So the main session, which is invited talks, is going to be chaired by Dr. Pakistan. We have invited talk from Dr. Ashar, who is from last, then from Dr. Ali, who is from side, and Dr. Manu from last. And then we have 9 papers selected. We will be presenting in this session 2B. Continuing in the afternoon, we will have the second session in the main hall. Dr. Ayaz from last, who will be presenting, Dr. Levidas from Canada, Dr. Shaitan from here, and Dr. Amir from Activities. And then we have 9 other presentations of research papers in the second hall. Continuing in day 2, we will have our third session in the main hall. We will have Dr. Mani Rashid, who is CEO there, and we will be presenting Dr. Usman, who is director of the National Center for Artificial Intelligence here. We will be presenting then Ahad Rashid, who is CEO of Activites over here, and Kurun he is the director of test development at the National Center, which is the National Center of Pakistan. Then we will have talk from Dr. Abdul Sama in the afternoon, and then about 13 different papers will be presented in the parallel session. Then we will have a panel session in the afternoon tomorrow, and then we will conclude the conference. In the meanwhile, workshops will take place, as we mentioned earlier. The bmnKY workshop and cybersecurity workshop. We also have a recruitment drive going on. We have companies who have joined us, who will be conducting interviews and looking at the skills and other activities which the computer science department, computer engineering department, and other departments have been able to impart to students. Now, coming to the conclusion, I'd like to thank, of course, the organizers who have been helping out over the past several months to make this conference a success of this nature. The whole conference takes almost a year to organize of this strength, of this nature. We have initially it has to be started electrically to go through the contract signing and also providing the quality requirements that they need. That is taken care of Mr. Hashimji, who is also the chair of the Communication Society and IEEE. We have the technical program committee, which headed by Dr. Lai, which will look at the papers for review. Then we have
Thank you very much, Dr. Waqar Mahmood. So, ladies and gentlemen, this was Director Kicks, Dr. Waqar Mahmood, जितनी तफसील से वो इस कॉन्फ्रेंस के प्रॉस्पेक्ट्स और मॉड्यूल्स के बारे में बता रहे थे, उसके बाद जरूरत तो नहीं रहती है, लेकिन रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो इसी को हमने वीडियो फॉर्म के अंदर भी तरतीब दिया है. तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द वीडियो, लेडीज एंड जेंटलमैन. जब स्पीकर कॉमन कर रहा है तो तालियां में जाते हैं, जब आइडियली कॉमन करती है तो भरपूर तालियां होनी चाहिए खातिरों का. हम दोबारा कोशिश करेंगे कि आपके सामने वीडियो लेकर. I would now humbly request you to move forward. This next speaker we have, I would request Khwaja Farooq Saab to please come at the podium and say a few words. Round of applause, ladies and gentlemen. Khwaja Farooq Saab. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank Dr. Waqar Mahmood, Mr. Kashif Rashid and Kicks for inviting me for such a nice event. My name is Khwaja Farooq and I am representing GNS Solutions Private Limited here. इससे पहले मैं बेसिकली आपको बताना चाहूँगा UET से हमारा एक काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है. जब मैं बेसिकली मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ, यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स के लिए UET में आना होता था और हम सोचते थे कि कभी मिल के UET के साथ ना कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे. तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आज मौका दिया और पिछले कुछ सालों से हम UET के साथ मिल के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. अभी हमने कुछ UET के लास्ट ईयर जो प्रोजेक्ट किए थे उसमें कुछ इनके इंटर्न्स थे जिनको हमने इंडक्ट किया था और उसमें भी डॉक्टर वकार ने, हमें स्पेशली डॉक्टर वकार का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि इनके आने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है डिफरेंट ना यहाँ पे UET में स्पेशली जो है. ठीक है, तो इंडस्ट्री और एकेडमिया में आपस में रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है. तो मैं इनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा डॉक्टर वकार को कि एक सक्सेस स्टोरी बनी है. हमारी कंपनी बेसिकली वी आर द टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इन पाकिस्तान. To have different D-band station we do have. We are also providing corporate internet services through fiber, optical fiber, satellite and wireless. ठीक है, सारे फ्लेवर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें जो हमारी मेजर एक्सपर्टीज हैं वो ऑप्टिकल फाइबर है. ठीक है, ट्रिपल पे सर्विसेज हम लॉन्च करने जा रहे हैं. अभी भी लाहौर के डिफरेंट एरियाज में हम लोग काम कर रहे हैं. सियालकोट, गुजरात और पंजाब पूरे में फैलने जा रहे हैं. तो इसके अलावा ये है कि हम UET के साथ जो ड्राइव हमने किया है, आज ही हमने इंटरव्यू सेशन रखा है. दूसरे हॉल में स्टॉल वगैरह भी हमने हमारी कंपनी ने लगाया. अगर स्टूडेंट्स वगैरह कोई इंटरेस्टेड हों तो हम प्रेफर करते हैं UET के स्टूडेंट्स को हमेशा से ना. तो उसके लिए यू आर मोर वेलकम फॉर दैट. तो इसके अलावा डिफरेंट पोजीशंस हैं, उसमें इंटर्न्स भी हैं जिनको हमने इंटरेक्ट करना है. हमारे पास
पास टेक्निकल सेल्स मैनेजर्स की पोजीशंस भी खाली हैं, उसको भी हम लोगों ने फुलफिल करना है। तो इसके अलावा मतलब डिफरेंट स्लॉट्स हैं, यू कैन विजिट आवर स्टॉल, ठीक है। तो विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। और मैं सबसे ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा यूईटी के मैनेजमेंट को, किक्स को, फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ नाइस इवेंट। थैंक यू। Thank you very much, Mr. Saab from GNS Solutions Private Limited. Moving forward, I would request Dr. Shahid Rafiq, respected dean, to please come at the podium to say a few words. भरपूर तालियों की श्रेणी खातिर के साथ डॉक्टर शाहिद रफीक साहब के respected dignitaries sitting on the stage, and respected delegates coming from other universities and industries, and dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I'm speaking on the behalf of Vice Chancellor because he was busy somewhere else and he asked me to do this duty. So it is the 17th International Conference on Open Source System and Technologies. I suppose it started in 2006 since the Dr. Waqar Sahab is here as a director. He was telling me this morning that he has started immediately after he joined this university. So ladies and gentlemen, please give a big round of applause for him. So this ICOSST is a distinguished international forum dedicated to the exploration and advancement of open source systems and technologies. As a pivotal event in the field, ICOSST 2023 offers a unique leadership interdisciplinary platform that blends distributed enterprise computing with e-government insights. Enterprise and government worldwide are leveraging open source software to redefine the norms of software application, design, implementation, and usage. Enterprise and government worldwide emerges not just as a source of innovative architectural solution, but also as a foundation of robust cross-platform frameworks essential for large-scale distributed systems. It is heartening to know that this year's conference theme selected is generative AI, which has recently caused a major stir in the industry and academia. It is expected to affect almost all professionals and provide an opportunity to optimize and improve productivity. I hope the conference will achieve its objectives and the participants will gain valuable insights presented by academia and industry experts. I wish all the success to the participants as well as these experts who will be delivering their keynote lectures. Thank you very much, everyone. Thank you very much, sir. टीम आईटी के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए खातिनों से। इससे पेशतर कि मैं चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज ओपनिंग सेरेमनी उनको यहाँ रोस्टम के ऊपर ज़हमत दूँ, मदू करूँ। ऑडियंस बड़ी भरपूर है, ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, जेंडर बैलेंस भी है, तो एक साइजेबल ऑडियंस है, इसके लिए भरपूर तालियां, अपने लिए भरपूर तालियां बजा दें। आप लोग दाद के मसले कर दें। वो कहते हैं लड़कियां लगन से काम करती हैं, मेहनत से काम करती हैं, कुव्वत से काम करती हैं, और जब मैं कहता हूँ तो लड़के अक्सर नाराज़ हो जाते हैं। उसके लिए दलील है, लड़कियां लगन से काम करती हैं, मेहनत से काम करती हैं, कुव्वत से काम करती हैं। इसका अंदाज़ा इस समझ से लगाइए कि आज से 1400 साल पहले जाहिल लड़कों ने जिन सहराओं में लड़कियां दफन की थी, आज वहाँ से तेल निकल रहा है। तो लड़कियों के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। टेक्निकल ऑडियंस बैठी हुई है, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज से लड़कियां खाली हो जाए। अब लड़कों के लिए भरपूर तालियां हो जाए एक बार, सारे मिलकर लड़के। और अब एक बार अगर भरपूर तालियां हो जाए चीफ गेस्ट को बुलाने से पहले, तो जरा सर्दी का एहसास भी जाता रहेगा। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर द ICOSST 2023। And with this round of applause, I would humbly request Ayub Ghori Saab, who is founder,
Hospital Private Limited, who is Executive Director NetSol. कहते हैं ना गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, हम आ गए हैं बता इंतजाम क्या क्या है, और फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। तो बहुत कुछ है बताते हुए मेरे पास एक तवील फहरिस्त है। नाइकैट के प्रेसिडेंट भी हैं, जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है फॉर एरोस्पेस। IT वाले भाई मुझे बार बार तंग कर रहे हैं सर, यहीं तक रहते हैं मेरा ख्याल। आपकी भरपूर तालियों में खातिन साहब यूं गौरी साहब। Assalamualaikum. Bismillah. Dr. Karsa, Dr. Shaisa, Khaja Sahab, and dignitaries and delegates. I'm really happy to be here. Or I think we have been coming here from NetSol for the last 3, 4, 5 years. हमारा बड़ा अच्छा relationship है. And Farhan has been the driver of this relationship. Thank you, Farhan, for persevering with us. I know we are not always able to accommodate, the time we ask for, but still you persevere. Thank you very much. बड़ा खूबसूरत तारुफ इन्होंने कराया बड़ा मुख्तसर सा, लेकिन इसका मतलब क्या है? So NetSol Technologies, is a success story, alhamdulillah. And I look after incubation and innovation within that. So Inspire, the department that I lead, and I've been leading for the last 7 years, has been instrumental in bringing number of startups. And because of Inspire, we have had the collaborations over here. Within Inspire, I was able to launch my own startup, which is Hospital, which is a platform for connecting care providers with care seekers, in a nutshell. Also, I lead National Incubation Center for Aerospace Technology, which is one of its kind, supported by Ignite and government. So we talk about innovation, we talk about incubation, we talk about growth, we talk about research, we are talking about creating more success stories. So when I come to a place like University of Engineering and Technology and Al-Khwarizmi Institute of Computer Science, what I see when I leave from here, I see a lot of hope. I see a lot of hope within yourself, the young, the youth, and our respected teachers, the professors. Our job over here is to learn and go out and do wonders in the real world. How far are we successful within that? That is the question. Hamare or becoming a superpower within technology and engineering, ek baal barabar ka fasla hai. It is all about the mindset, the winning mindset. Are we ready to take on the world? Are we? Koi awaaz to hai? Yes, okay. ये एटीट्यूड जब तक आप नहीं लेके आएंगे, विनिंग एटीट्यूड, और सिर्फ अगर आप ये सोचेंगे आई एम गोइंग टू डू गेट अ गुड जॉब, या मैं रिसर्च में साइंटिस्ट बन जाऊंगा या मैं इंजीनियर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, that is not good enough. Each one of you possesses the potential to be a winner, to be a champion. What is holding you back from being a champion is only you. आप अगर इस इंस्टीट्यूट से, इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट with such a vast history, हमारे तो हिस्टोरिकल एक बड़ी बात है मेरी इज्जत के लिए कि यूईटी में मैं आके मुझे ऑनर किया गया, सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से बात करूं, I feel humbled yet overwhelmed, and yet I also feel it's my responsibility to remind you, wake you up, shake you up, to be a winner, to be a champion. We are all there. I mean, ख्वाजा साहब ने बात की है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया को मिलकर काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बड़ी अच्छी ये स्कीम्स लेके आए हैं, उनको देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इसी तरह आईटी कंपनीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इसी तरह एनआईसी फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज अपॉर्चुनिटीज है, फॉर स्टार्टअप्स है। आपका इंक्यूबेटर सेंटर भी है, इट विल सपोर्ट यू एज लॉन्ग एज यू हियर, परहैप्स बियॉन्ड दैट। लेकिन एनआईसी इन रावलपिंडी is completely independent. You come over there by competing, bringing new ideas and become part of that ecosystem. So
think big, dream big, and I again congratulate you for this conference organizing. Thank you very much for listening. So this is you, Bhari Saab, ladies and gentlemen. Thank you very much, sir, for waking them up, shaking them up, and Team IT is finally woke up. I would request you, sir, to please play a video. Dekhiye. Yes. So there you go, ladies and gentlemen. You have so much to witness in these 2 exciting days. So a huge round of applause for Team ICOSST and the management. भरपूर तालियों की चाहिए आतिदा साहब. अगर कभी मेरी बस में हो तो कोई ऐसे शहर बसाऊं मैं, जहां धूप छाऊं गले मिले, जहां बाज रुत में भी गुल खिले, जहां चांद मांद ना हो कभी, जहां आदमियत के नुत को लब पे न शहर यार का खौफ हो, जहां सरसराए ना आदमी की रगों में कोई हरास तक, जहां लोहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग, कोई निशाना हो, जहां चाक हो कोई पैरहन, न सुखनवरों की ज़बां कटे, जहां सच को सच से वो वास्ता, जहां जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता. इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर चलेंगे, इसी तरह कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करेंगे तो ऐसा माशरा तश्कील देने में भी कामयाब हो जाएंगे. So with your permission sir, now we have to give away some souvenirs, certificates. अगर आप प्लीज सामने आ जाएं, if you please move forward, please come right in front of the stage ताकि लाइट्स, कैमरा और एक्शन वाला काम शुरू किया जा सके. आपकी भरपूर तालियों में खातिन हज़रात. प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर हयात साहब, खातिन हज़रात, ख्वाजा फारूक साहब, डॉक्टर शाज़ेब राठौर साहब, डॉक्टर वक़ार महमूद साहब, डॉक्टर शाहिद रफीक एंड अयूब वारी साहब, we're all lined up. सबसे पहले आपकी तालियां, सबसे पहले आपकी तालियां खातिर हो जाए. मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ख्वाजा फारूक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सोवेनियर रिसीव करें. डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ख्वाजा फारूक रशीद साहब फ्रॉम GNS Solutions Private Limited. Our chief guest to present souvenir to Khwaja Farooq Rashid Sahab from GNS Solutions Private Limited. Next up is Dr. Shahzeb Rathore Sahab, Chair IET Lahore. Shahzeb Rathore Sahab के लिए तालियां होनी चाहिए. Our respected team, who is
participating on behalf of Vice Chancellor Dr. Shahid Rafiq Saab. So please move forward and receive your souvenir. Then I would humbly request our Vice Chancellor, Professor Dr. Nasir Hayat Saab, Hathi Nazrat, Dr. Nasir Hayat Saab के लिए भरपूर तालियां. And last but not least, I would request Dr. Waqar to please present souvenir to the chief guest of today's opening ceremony, Ayub Saab, who is Executive Director NetSol, who is President NICAT, and founder of Activites Private Limited. So this not ends here. We have a group photo right in front of our auditorium complex. We have to open the exposition as well. So I would request all the audience and the distinguished guests now they move forward to the main auditorium complex, where we have a group photo and an exposition to open it up. So I would request all the dignitaries to please move forward and proceed to the main auditorium complex, and the audience will be witnessing an exciting exposition over there. So I thank you all, ladies and gentlemen. Watch the video.
joining us today. In this session, we will have some interesting talks on a variety of topics. I would like to call on stage Dr. Rashid Mohammed Ramzan. The first our invited talk, innovation knowledge-based economy chief design. Dr. Rashid Mohammed Imzan received the BS degree from the University of Engineering and Technology, Lahore, Pakistan, MS degree from the Royal Institute of Technology, Stockholm, and PhD from Linköping University, Sweden in 1994, 2003, and 2004 respectively, all in electronic engineering. He is the recipient of Best Award, Paper Award, and two Chancellor Innovation Award. Please welcome Dr. Rashid Mohammed Imzan with a big round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. So the title of our talk is Knowledge, Basic Economy, Innovation, and Role of Leadership Design. I am a professor at past National University Islamabad and also running a company called UET Event, which deals with the innovation. So this is our lab, which is the integrated circuit lab. So we have two HPC members, which are IC designers basically, and four lab engineers, two research associate, and 45 full-time MS students. So this program is master program is a full-time and it starts from the morning and goes to the evening. And major emphasis is on the hands-on integrated circuit design. These are some of the chips we have designed in last 5 years. So these are the work done in the lab. So this right side chip and left side chip we have named as the Kamal 1 and Kamal 2. This is one of my colleagues who passed away in the COVID. So we named the chips in his memory. Kindly please you can see silent please at the end. So these chips are basically for projects in 65 nanometer CMOS. They are manufactured from the TSMC. So they are tested. Something like 60 to 70% of these projects are working, and we are publishing them step by step. So a couple of papers are already we have published on these chips. So if you look at the size of these chips, I will be talking particularly about the knowledge-based economy, that why this particular field is important for the knowledge-based economy. Just keep in mind the size of these microchips. This is my finger where we have placed these two chips. They are actually 1 by 1 millimeter, and they bear all these projects which you see here, which is DRB, TRNG, millimeter wave, LNA, AD converter. So all of these fit into these 1 by 1 millimeter chips. So this is relevant of few slides. These are some papers we have done in a shuttle provided by IEEE, and this is the Skywater 130 and 180 nanometer technology. Almost 20,000. The cost of one shuttle is $20,000. So they provide free to the people who compete for the projects. So we send the projects and they select the projects and they manufacturing and give it to the PCB. All the expenses are paid by the EFAC and the IEEE. So if you are some of you are enthusiasts in IC design and cannot afford the tools which are very expensive, so you can use the tools which are available in public domain, and then design the chips from platform of IEEE. This is the chips recently designed. We have trained almost 93 engineers in Oman. And this is the project done from our lab with the company, silicon-based company BSN. So this is a 3-year project, and this is the chips designed in the
Oman, and these are in the testing phase, these are not valid. So this is a bit of introduction about the lab. This is one that when we started this program, so contrary to the other universities, we started this full-time program, which is the morning program, and students are not coming on the evening. The reason being, IC design is not a theory, it's a theory plus the hands-on experience. So in my view, the part-time program is not a good option for the integrated circuits specialized program. So Alhamdulillah, we got the funding from industry. Initially, we got some money from America, and we got the tools. Then we got some projects from CPEC, and then lately we got the projects from GSM and Oman, and then the lab is self-sustaining, and now the program is independent, and we are able to maintain the takeouts and what the students funding out of the resources that is funding themselves. Now let's come to the, after the introduction of the lab, let's come to the topic, which is knowledge-based economy. We hear this term a lot in Pakistan. You have just seen the chief guest from startup. So there are at least 5 to 6 incubation centers around now in Lahore, in Islamabad. There are hundreds of startups, and there's a lot of hugely positive activity, and they all talk about the knowledge-based economy. So if you hear a guy coming from industry, he will talking about the knowledge-based economy. Your teachers and professors are talking about the knowledge-based economy. The guy in the IT industry is talking about the knowledge-based economy. The guy from the finance industry is also talking about the knowledge-based economy. But if you listen to this term from last 4 or 5 years, especially in the Pakistani context, they don't mean the same thing. Everybody has his own context and view of the knowledge-based economy. So what I will be doing here, I will be putting the engineer's view of knowledge-based economy. How engineers think that what is the knowledge-based economy. Then we will talk about that for the knowledge-based economy, what is the key to the knowledge-based economy. Innovation is the key to the knowledge-based economy. I will repeat, innovation is the key to knowledge. Then we will talk about the innovation and how to be innovators. There is no book approach. So I don't know how one can become an innovator, but I will share my experience with you that how our journey is traversed, and that is the conclusion of the talk. And during this, we will do a case study, which is the vaccine chip which we have designed. This is a microchip for the detection of the vaccine temperature, and this is in context of the innovation. So let's see what is the knowledge-based economy. And here I would like that you please pay attention for 5 minutes. These are connected slides. So knowledge-based economy, the definition with engineering perspective. How the engineer look at that knowledge-based economy. For example, all of you know that chips are made up of transistors, and transistors are made up of silicon. And the silicon is sand. This is glass you see here is also silicon oxide. So this is the our deserts are full of the silicon. What happens to take the silicon from here? Can I move the cursor? Okay, so you take the sand from here. Then you process it, this is called ICOSST, and then you cut it silicon wafer, you put the integrated circuit on silicon wafer, you cut the silicon wafer, it's called slicing, you package after the it's IC, and IC is the mobile phone or your devices you are using. Let's now have a little bit of the deeper look, and let's try to calculate the cost of a single transistor. So let me take a typical case. Most of the notebooks you are buying, they are over i7 new notebooks which are your desktop. So let's take example of i7 1070K. This has
10.3 billion transistors on a chip. It has It different has different variants. variants. So So that's a typical that's a value. typical value. It's a 10.3 billion It transistor. consumes almost It consumes 125 almost watt, 125 watt, 2.4 2.4 gigahertz gigahertz. typical processor. So the price So tag the is price tag is $400. Comes with the packaging It comes with the and packaging everything. and PCB and If you everything. look at the So die if you cast, look which at is the die actually cast, which is integrated actually circuit inside the integrated circuit package, inside the roughly package, about it's roughly about $50. $50. Now, what will be the So cost? now what will be the cost for a resistor? 50 by It's a 50 10 by million. 10 So your million. cost So of a your single cost of a transistor single is transistor is of 5 nano dollars. Please So keep please this keep this figure figure in in mind. mind. So So that's why I I asked you to please pay attention because these figures are connected. So how how much is the cost? 5 5 nano dollars dollars for for a a single single transistor. transistor. So let's Now let's come come to to the the cent. So I So I quickly did a survey when I was making the the slides slides last week. So we So have we have a different different center. center. In Here Lahore, in you have Lahore, a you have a staff staff center. center. In In Islamabad, we have a center from the Laraspur, we have the center from from Ghaziprotha. Ghaziprotha. These are So the these rates are of the the rates center of the which are center which are available in this screen.com. screen.com. So So per per cubic cubic feet feet sand, sand, Ghaziprotha sand is Ghaziprotha high sand is high quality. quality. Per So cubic per feet cubic feet price is price is 110 rupees. 10 rupees. So if So you if take you the take the today's rate, rate, it's $0.4. $0.4. So now this is a It's one one cubic feet. So if So you if take you the take the granularity of granularity of sand, sand, so so usually granular the sand granular which sand which you you use use in in the the plaster, plaster, grain its size grain is size is 125 125 micrometer micrometer to to 500 500 micrometer. micrometer. Let's So make let's the make the grain size grain of size of something like 250 250 micrometer. micrometer. And And now now find out find that out that how much grains grains fit fit into into the one cubic feet. So if you So if you calculate it's around around 5 million. So So now you calculate the cost of per grain grain of the sand. sand. So it's a So it's a $0.4 over a over a 0.05 billion. How much So how much is this? 8 nano dollars. dollars. So Now, what do you establish it? The cost The of cost of the transistor transistor was how much? 5 5 nano nano dollars. dollars. The The cost cost of of grain a of grain of sand sand is how much? 8 8 nano nano dollars. dollars. Your Your grain of of sand sand from from the the Ghaziprotha Ghaziprotha is more more expensive expensive than the than the finished finished transistor transistor you you are are using using inside your computers computers are the same microprocessor in the light form you are using in your mobile device. So this is one aspect. Now let's move to the second aspect. So let's So let's take in the processor. processor in itself. So this processor will need 4 16 thread, it is 1200 bulb grid array package. So its size of the die is a 18 into 16 into actually it's a 10 centimeters the size of the die. Size of the package. So what is the size of die? It's a 20 into 10 into 0.3 millimeter. It's a 20 millimeter into 10, 2 centimeter to 1 centimeter, and the wafer is 300 micrometer thick. Now Let's take the weight of this wafer. The silicon density is 2.329 gram per centimeter. So if you calculate the weight of this actual silicon die, which I which I have have shown on the figure, this was actual silicon die. So if this is a 1 centimeter by 2 centimeter, then its weight is something like 0.15 gram or 150 milligram. Now calculate the price of this sand. It's a $50 over 0.5, so this is $330 per gram. What's the today's price of gold in the market? It's $65 per gram. Now connect all these three dots. You have a transistor which is less expensive than the grain of sand which you got from Ghaziprotha, and what you produced out of it is a silicon die which is how much?
8 to 10 times more expensive than the gold. So commodity price, I have I have summarized here, Cost cost is $5 $5 nano, your raw your raw sand sand is is $8 $8 nano, nano, your your silicon silicon price price is is 330 per 330 per gram, gram, your and gold is gold is 65 $65 per per gram. gram. So What you have heard heard use use the this the commodity commodity cost which which is is less less than than the the sand sand of of Brent, Brent, but your but your actually finished product you are selling selling in the market market is is 10 10 times expensive expensive than the gold. and this And this is hard to balance. what you What did you did actually, actually, you took you the took the sand, sand, applied applied your your knowledge, knowledge, produced produced the the device device which which is is inexpensive as inexpensive as dirt, dirt, produce the produce the product product which which is is 10 times 10 times expensive as expensive as gold. this knowledge This applied knowledge applied in this relevant way creates creates a a knowledge based knowledge-based economy. economy. I don't I know don't how know the how economists economists define it or define it or how the how State the Bank of State Bank of Pakistan Pakistan defines define it, it, but this is the engineers engineer's view of the knowledge based knowledge-based economy. economy. So Now, all of you are engineers, Let's so let's define define who who is an an engineer. engineer. So So, this this knowledge-based economy, who creates definitely definitely this knowledge-based economy is created created by the engineers. engineers. So So, what is your definition of engineer? Anyone Anyone will help me here? Let's Let's make the talk a little bit interactive rather than lecturing. I think all of you are fed up fed up of of lecturing in university. हाँ जी हाँ जी, आपका क्या ख्याल है engineer कौन होता है? जी, आप ही आप ही बता. Anyone? टेस्ट Test नहीं हो रहा है, there's no marks here. Quiz नहीं है. बताइए, please. Who built something? इंजीनियर Engineer वो होता है जो कुछ बनाता है. Anyone else? Solve problem. Sir? Solve problem. जी. solves Solve the problems. Engineer solve the problem. Anyone else? Yeah? Create a problem. creates the problem, Envisages the problem. People People put put society society का का problem problem envisage envisage करके करके विशाल विशाल that's engineering. हमारे हमारे यहाँ यहाँ जब मैं यहाँ पीयूटी और मैं स्टूडेंट था तो हमारे टीचर होते थे कॉलेज की तरफ से देख अब आप रिटायर हो गए हैं शायद मैं इन्होंने डीसी मशीन्स का क्लास पढ़ाई थी और यूटी में जो लैक्चर था उनकी पहली क्लास हमारी उन्हीं की थी उन्होंने हमसे ये पूछा कि इंजीनियर कौन होता है आपको आपको पता है कि लंबी सी दाढ़ी सर पे टोपी पहनते थे माइक सा लगाते थे इधर अपना और अपना आया हुआ एक एम्पलीफायर था बहुत आहिस्ता बोलते थे की मदद से एम्पलीफायर की मदद से हमें आवाज सुनाई देती थी और ये 35 साल पहले की बात है जहाँ पे लेक्चर आ रहा है उसमें क्लास उन्होंने कहा इंजीनियर कौन उन्होंने कहा इंजीनियर कौन होता है हमने क्लास में हम यूटी में सिलेक्ट हो ड्यूटी पे सिलेक्ट हो गया इलेक्ट्रिकल यूनिवर्सिटी मेरिट टॉप पे हम अपने हम अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं आप हम क्या लेकिन हम इंजीनियर डेफिनेशन क्या है तो और भी अक्सर साहब ने कहा कि इंजीनियर वो होता है वाली सारी लाइफ सुनने से आपने दी बाकी इंजीनियर वही होता है लेकिन मौलवी साहब की जो डेफिनेशन है उसके हमने क्या क्या लगाया अब मैं ट्रिपल साहब का जब हो गया मुझे लगता है कि ये असल डेफिनेशन तो मैं इसी को प्रमोट करता हूं उन्होंने कहा कि इंजीनियर वो होता है जो मट्टी में हाथ डाले तो सोना बन मैंने जो पिछली स्लाइड आपको दिखाई है उसमें इंजीनियर्स ने क्या किया रेत में हाथ डाला है और उसको क्या बना दिया सोने से 10 गुना महंगा बना इंजीनियर वो होता है जो रेत में जब हाथ जब डालता है उसको उसको सोने से 10 गुना ज्यादा महंगा बना देता है दैट्स कॉल्ड द नॉलेज बेस तो मौलवी साहब ने हमें कहा तो ये डेफिनेशन जो है इंजीनियर की जो मेरे नजदीक करेक्ट डेफिनेशन है वो क्या है गाय तो जो मट्टी में हाथ डाले तो उसको सोना बना देते हैं सो इंजीनियर्स ये काम करते कैसे अगला अगला सवाल सवाल जो उठा के हमारा इंजीनियर्स ये सारा का सारा काम करेंगे कैसे उसका जो सिंगल वर्ड है वो है इनोवेशन ये सोना बनाने का जो प्रोसेस है जब तक इंजीनियर इनोवेटिव नहीं होंगे ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता अब अगला क्वेश्चन है कि अगर इनोवेटिव होना है तो हाउ टू हाउ टू बी इनोवेटिव
पहली बात पहली बात यह है कि innovation इनोवेशन का काम कौन कर सकते हैं? All of All of you who are sitting in the audience, all of you can do this work, including myself. So beginning based economy जो backbone कौन लोग हैं? These are actually the backbone of the basic economy or knowledge based economy. और innovation जो है, this is free of thinking. It's not something आपने सारी किताबें याद कर लेनी है, सारे एग्जाम्स में पास लेना है. I'm not against the grades. It's a way of thinking. तो इंजीनियरिंग का जो way of thinking है, वो ये होना चाहिए कि जो भी चीज आपके गिर्द नजर आ रही है, वो कैसे काम करती है, वो आपको पता होना चाहिए. इररिस्पेक्टिव के अब ये डेस्क कैसे बना है, आपको पता होना चाहिए. इस प्लाईवुड को क्या कहते हैं, ये कैसे होती है, फैक्ट्री में कैसे जाती है, इसको कर्व कैसे करते हैं. You should know. ये कारपेट नीचे बना हुआ है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है? पाकिस्तान में बनता बाहर से आता है. ये सिंथेटिक मटेरियल है, सिंथेटिक मटेरियल तो कहाँ से आया है? IBS प्रोडक्ट है. Everything, not in the electrical engineering, everything which you see around, ये कैमरा लगा हुआ है, ये डाक जो है डिलीवर हो रही है, माइक्रोफोन लगा हुआ है, इसके अंदर माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन किस तरह का होता है? इलेक्ट्रिक टाइप होता है, टेस्टर टाइप होता है. Everything which you see around, ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर लाइट जो ट्यूब लगी हुई है, it's not LED ट्यूब, why it's a lamp? क्यों ये हीट अप होता है, इसके नीचे फैन क्यों लगे हुए हैं, स्पार्क क्यों होंगे इसके अंदर? Anything which you see around, you should think about ये कैसे काम करती है. ये पहला ingredient है to be innovative जो है. We are thinking आपका जो change होना चाहिए, that should be the way of. दूसरा approach है कोई innovation नहीं, मुझे मालूम नहीं है. जिस तरह YouTube देखते हैं कि खोल लेते हैं, आप कहते हैं डेटा फ्राई करते हैं, YouTube वाले बताते हैं डेटा कैसे फ्राई कर लेते हैं. तो इस तरह की innovation की कोई approach नहीं है जो आपको बताई जा सकती है, आप innovative है. तो कैसे की जाती है, मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर सकता हूं. नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं. तो ये हम क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं? इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमारी जो होप है वो मेरे वाली जनरेशन होगी, वो ये पहली लाइन वाली जनरेशन होगी, वो जनरेशन है जो इस पहली लाइन से पीछे बैठी. यू आर द होप. और इस काम को करने के लिए ये काम पास में मुमकिन था, लेकिन बहुत मुश्किल था. अभी ये पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है, और पास में इसमें बहुत इजी हो गया है. और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा कि ये इजी हो गया है. मैं आपको बताया कि हमारी लैब में ये सारा काम हुआ है. ये काम 2010 में भी हमने करने की कोशिश की, उस वक्त हम नहीं कर सके. अब ये चीजें फैसिलिटेशन बहुत ज्यादा हो गई है. आप पाकिस्तान में आप हाई टेक या डीप टेक इंस्टॉल करते हैं, उसका काम आप कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं. मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की बजाय कहता हूं कि बेहतर हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करें. प्रॉब्लम्स तो है, नोन है सारी, तो उनको सोचने से फायदा नहीं होगा. तो बेस्ट थिंकिंग इन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे मामला आगे चलाते हैं. तो इसके लिए रिक्वायर्ड चीजें क्या हैं? रिक्वायर्ड चीजें तीन है सिर्फ: ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस और कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस जो आपकी इंजीनियरिंग का स्किल है जो आप सीख रहे हैं, और ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस जो है ये इंट्रिंसिक स्किल है जो आपकी फैमिली से आता है, घर से आता है, माशरे से आता है, और हम खुद अपने आप के अंदर हार्टफुली पार्ट करते हैं. क्योंकि आप सारे डर हैं, तो फर्स्ट टू थिंग्स वी कैन डू फॉर सेल्फ, और तीसरी चीज है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं. अगर इन इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस और कॉम्पिटेंसी, तो थिंग्स कैन बी डन. उसका बैकग्राउंड तारक को बता दिया, इन्होंने बताने की जरूरत नहीं है. तो और ये इनोवेशन जो है उसको जब आप इनोवेट करते हैं, तो इनोवेशन के लिए एक सबसे बड़ा इनोवेशन इंजन कहाँ पे आती है? सिलिकॉन वैली का लार्जेस्ट इनोवेशन. वहाँ पे जो इनोवेशन होती है उसको प्रोसेसेस हैं उसको मेंटेन करने के लिए यूएस पेटेंट्स आर वन प्रोसेस टू मेंटेन दिस इनोवेशन. तो अब अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो इनोवेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे स्टार्ट हो सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है.
इनोवेशन 3 तरीके से हो सकती है, इसके अलावा भी तरीके होंगे लेकिन मुझे मालूम नहीं, इसके बारे में एक्सपीरियंस रहा। पहली इनोवेशन का जो प्रोसेस है वो नीड बेस। हमने बहुत पुराना मामला सुना हुआ है कि जरूरत की आपकी बस प्रोसेस इज नीड बेस इनोवेशन, और इसकी जो केस स्टडी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। Second process is the inquisitive art process. इसका मैंने अभी जिक्र किया था कि we should have an inquisition about our environment and we should know how the things around us are working and what are the basic scientific and engineering principles working our things. If that inquisition process is there, then we can come to this inquisition-based innovation. And third is the cross-disciplinary idea coordination. This is very important, especially nowadays. So people learn from a cross-disciplinary idea. Actually, the products and the innovation, they are not stemming from the single technology. अगर आप एक चीज बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अंदर कुछ एम्बेडेड सिस्टम का साथ चल रहा है, उसके अंदर एआई का इंजन चल रहा है, वो किसी बायो प्रोसेस के साथ लिंक हो रही है, वो किसी पैकेज में आ रही है, अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो गई तो cross-discipline is the one of the ways. तो पहले का जो इनोवेशन का हमारा एग्जांपल मैंने शेयर किया ये है कि वैक्सीन का एक चिप है जो वैक्सीन के अंदर डिप करते हैं, उसकी आपको डिटेल दिखाऊंगा, चिप्स भी दिखाऊंगा बाकी। सेकंड वन आई विल नॉट शेयर 45 मिनट्स की टॉक को से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, दैट्स द इंटरनेट ऑफ फ्रीज, और दिस इज द प्लांट्स को वाटर कैसे किया जाए और उसके प्लांट के जो सेल्स है उसके अंदर सेंसर प्लांट कर दिया ताकि प्लांट आपको बता सके उसको क्या करिए। थर्ड आइडिया जो है वो फ्यूल सेंसिंग है, ताकि आपकी गाड़ियां जो है वो जो उसका इंजन है उसमें जब धुआं आने से पहले आपको गाड़ी ही बता दे कि मेरी सेल खराब हो गई है, ड्राइवर बन गया, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दिस इन्वेंशन। So this case study is a smart vaccine quality monitoring and tracking system. अगर आप याद हो 2009-2010 में ये कवरेज आई न्यूज़पेपर में, मैंने नीचे लिंक दिए हुए हैं। I also saw that coverage के there is a polio outbreak in KPK और polio के cases आने शुरू हुए and Pakistan and Egypt was two countries with the polio. उससे पहले पाकिस्तान was also polio free. That was a big disturbing news. When we dig into a bit deeper into it, we found out that ये ऐसा नहीं है कि the people, the children who got the polio, they were not vaccinated. There was some cases reported that they got the polio even the children were vaccinated. So जब इस रिपोर्ट को न्यूज़ फॉलो अप किया तो चला कि ये जो वैक्सीनेशन के साथ केसेस हुए हैं दे आर ऑलरेडी इन नोटिस ऑफ यूएनओ यूनेस्को के लिए नोटिस में, और इसके बुनियादी वजह है कि जो वैक्सीन बच्चों तक पहुंच रही है वो वैक्सीन सारी की सारी जो स्टैंडर्ड है वैक्सीन के जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए उस 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें साइकिल के अंदर रिमेन नहीं होती और नहीं पहुंचती। So the vaccination was there, लेकिन वैक्सीनेशन की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई। तो उसका सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का कि अभी जो करंट उसकी टेक्नोलॉजी थी वो कैसे मेंटेन कर रहे थे, वैक्सीन की जो बॉटल है उसके ऊपर टैग लगा होता है और व्हेन इट गोस बियॉन्ड सर्टेन टेंपरेचर रेफ्रिजरेशन से बाहर निकलती है तो दैट टैग चेंजेस द कलर। आजकल बैटरीज में भी आता है, कार बैटरीज के अंदर और से देते तो टैग कलर चेंज कर, दैट वाज द वे टू मैनेज द टेंपरेचर। सर प्रॉब्लम क्या थी, because that tag doesn't tell you how long the vaccine was out of the temperature, it doesn't tell you what was the it doesn't tell you that what was the amount of the temperature which is excluded and where this event happened. So time की आपको information ये temperature कितना हुआ कितनी duration के सारी information. So we propose the system that you have a IoT activated gateway and then here you have a vaccine bottle here. So you have a vaccine chip which is immersed in the bottle. This box and this is a special box where vaccine bottle are put
and this is attached to a gateway which records the temperature all the time. So vaccine की bottle के नीचे जो electronics है that records the temperature and even other parameters all the time, and then you can connect it to the IoT gateway. Now, when you put it in the logistics, first this vaccine is manufactured in Switzerland, it's transported from Switzerland to Dubai, or shipped to Dubai. Then, even this container is inside the ship, still it gets regards the data. And the moment it goes to the secondary storage और वहाँ पे इंटरनेट इसको दोबारा मिलता है तो अपना जो data उसके रिकॉर्ड किया होता है again to the IoT gateway. And then it will get to the logistic provider and then it comes to the primary storage and all the time it's moved back. And then especially in KPK जो आपकी secondary storage के बाद आपके expert के पास जाता है, they take the box and they walk say kilometers to the hills. And there is a house up there जहाँ पर उन्हें वैक्सीन पानी होती है, तो उस दौरान भी आपका टेम्परेचर जो है वो उसका बाकी पैरामीटर वैक्सीन के कंट्रोल हो जाएगा, and then you serve it to the child, and in this case आपको पता होना चाहिए कि किस child को उसकी ID को आपने ये वैक्सीन सर्व की है. So if this covers R2R, this means कि आपको पता होगा कि ये जो वैक्सीन की ID आई है, this has been tracked from manufacturing to the child's mouth. So now where this whole microelectronics come into the picture? It's the vaccine bottle. You have a CMOS chip, और आपने यहाँ पे डाल दिया. Now this chip doesn't have a battery and it's a wireless powered up. और आपको पता है कि जो most of the vaccines they are solutions in the water, they are and electromagnetic wave when it doesn't pass the water because it's a ionic होता है, aqueous solution है. So here it's a magnetic power transfer from bottle to the chip and it has the electronics around it. और ये फिर इसमें container में डाल दिया data मैंने आपको explain किया. If you look at the chip now, this is the side which is under the bottle, which is the reader side, and this is your microchip, which is 1.5 millimeters, and this is a silicon or glass. So you can put it up there, and this goes into the bottle. So this is a rectification, this is a power data shifting, and this communication is taking place at the same time which are doing the wireless power transfer. How if there is a loading on this side, ये जो loading यहाँ पे आना, this means the relevant circuit will change the current, and the same current will change in this relevant circuit. So change in current will be detected, and this means the data in here will be transferred back. So there is no wireless link. Actually, the power link which is covering up the chip is also responsible for the data transfer on the backside, and this is called the backscattering. So this is the ultra low power sensor. So I will not go into the transistor details. So we just discussed this transistor. So this transistor is how much? 9 nano US dollar per transistor. This is almost free on the chip. So this is some ions transfer. So this is a nanowatt temperature. The power of this chip should be extremely low because you cannot transfer milliwatt of power from the bottom to the every bottom. The power is in microwatts. So then this means your electronics has to be a nanowatt. So this is working in the nanowatt regime. So we designed the sensor which is 1.66 hertz per centigrade, and it's 2 nano. Power is 2.5 microwatt. So we made, so this is working fine. We manufactured this chip, we made the chip. So this is the way it is. So then this concept of the wireless power transfer. You can have there's a two type of wireless power transfer. One is when you are using the magnetic, one is inductive like a transfer. But the moment you separate the coils, Ready? Okay, thank you. Coefficient of coupling goes exponentially down and the power transfer is almost zero. So what is the second concept? It's a resonant, and you know that when this circuit is resonant at one frequency, so the speed of the circuit is say 100. So this means even if you are supplying the outside, inside the summation of I multiplied by the Q, 100 milliamperes on the resonance circuit.
you need to count the capital. So the magnetic field generated will be different by more fast. So that property is used here to transfer this energy. And then there will be experiment with two type of coils. One, this is the inner coil on the PCB, and this is the coil with the ferrite. So this gives the more peak power. So I have got the small note here that 7 minutes are left, so I will wrap up now. This is the different power transfer curves for this both type of the powers. So this is the backscattering from someone. So here we are switching on and off on this case. Here the load is switched on and off based on what we temperature we know. So when we do the digital and coding and kind of formulation, we can detect this fact. You see when the current in the transmitter side is changing. So by detecting this changing, we can read the data from this side. So this is the measurement results of the microchip. So during this whole process, we realized that the single link, which is working fine, but this is not an efficient because this rectifier and regulator, this has an efficiency of 3 to 5% at this low voltage. So CMOS. So if this one clock efficiency is 3%, the efficiency of whole clock can not be more than 3%. So what to do? In this case, we said, okay, let's try to design a logic family, which is a new kind of logic family. We named it RF logic and AC logic. So which is working directly from the AC circuits. So all the logic gates you have to supply the DC. So in this case, the logic cells we use that doesn't need the DC. So you need a two signals. So this is the one signal. So for that we made it a orthogonal I and Q. So all of you are aware of the orthogonal signal, which is I and Q in the radio. So this is I and Q power transfer, and we are using this I and Q signal to run the logic. So this now the second chip we taped out. This doesn't have the rectification. This has two coils. I and Q signals are coming in, and now whole logic processing is taking place in without any DC voltage, just on the so this was a new innovation in this case. This is the test plan of this one. So this is the circuit which is working on here. So you see here this is a VI class, which is a I, and this is a Q class. So this is kind of new kind of logic gates which are working on. This is the D-switch part working on the AC logic. So we taped out this chip, we made it, so this logic is working. So this is the measurement of the D-switch block. This is the board microchip and PCB, and this is the whole concept of this one. So we find the US patent, which is granted on the right side, and two US patent we filed about the AC logic and others, which are different stages of the process, and we published a couple of years. And now we are trying to raise some money for the startup so that we can really convert this to the from the innovation to the on the product side. So thank you very much for your attention. My time is over. So if you have any questions, please. That scattering is very good. Which sensor you are using from the chips? It's temperature sensor only. I think I showed the slide. Maybe you can indicate this was it. So what information supposed to change in current and voltage will be checked at the magnetic coil side? So it will happen. And that frequency puts the pharmaceutical and pharmaceutical people have already established that the vaccine and health is as below 2, This is a one sensor input. In the chip, you can put other sensors. For example, you can put the density
vaccine density center. आप देख सकते हैं उसमें जानने तो नहीं लागे. You can put a lot of other. The basic technology is the one you can put in vaccine chip inside the vaccine bottle, and this bottle is also glass. And the silicon you are making is also glass, so it's a vaccine safe technology. You doesn't have to put the package, no bond wise, just the package on the inside the aqueous solution of the vaccine. Yes, please. Thank you so much. मैं एक सवाल ये था कि you said कि ट्रैक भी करना पड़ता है कि टेम्परेचर कितनी देर के लिए ऊपर गया, तो is there storage inside? ये जो है ना मैंने सिर्फ चिप वाली साइड कवर की है एक्चुअली मेरे पास शॉर्ट टाइम. अगर इसको हम देखें तो ये वाला the part I covered is inside the bottle of the there's a box जिसके अंदर ये bottle जाएगी. But under the box this all electronics is there which connects with the gateway और ये storage करता है. तो अगर आपका इंटरनेट नहीं भी है तो still you can keep the data. ये वाला part सारे का सारा Like you have to be connected to this. not all the but for example if you are put there is the wires in the box, so there's no internet. You are transporting ship चल रहा है उधर कोई connectivity नहीं है. So box can you can program that for every minute you take the temperature. Box ऊपर ही है. When the moment the box gets the connectivity to upload all the data, मैं इधर से आया हूँ और ये सारा मेरा कुछ बैग है. There is no question. Thank you very much. I start second. Thank you. It's a good initiative. Ask me a question now. Thank you, Dr. Rashid Mohammed Zan, for your informative talk. I would like our session chair to present the shields, Dr. Rashid Mohammed Zan. Social media. Sorry. Thank you. अभी डॉक्टर साहब की प्रेजेंटेशन है ना हमारे नहीं ये वाली है ना Thank you, everyone. The title of our second invited talk, Coordinating Across Productivity by Dr. Jahar Mahmood Qazi. Dr. Jahar Mahmood Qazi is distinguished assistant professor in the field of computer science, renowned for this expertise in quantum computing and cognition, cybernetics, artificial intelligence, and bioinformatics. Dr. Qazi's research interests are diverse, spanning both pure and applied domains. He has co-authored a book titled Machine Learning in Bioinformatics and a broad for protein sequence analysis alongside Khalid Ahmed. Please welcome Dr. Jahar Mahmood Qazi with their big round of applause. ये जो जी मुझे भी सारे सेशन के साथ करते सारे रहते सेशन देखना तो अगर हमारा ये गेस्ट रहे तो समझा दी है ना
निकल जाते हैं चलो आप चलो मैं ड्राइंग बनाते थे ये जो आर्ट ऑफ मैंने ट्रांसफर बनाते थे वो बनाते थे वोल्टेज सिस्टम मैं फर्स्ट ईयर में से मुझे शौक था मुझे रात को मेरे घर आ गया मैं शाम को सब पे घर जाता था क्लासेस में तो जाकर ड्राइंग करते मेरा भी था लेकिन हमारी उसके साथ कोई बेचता पंजाब उसके साथ हमारी जो रिलेशनशिप भी रहती है What precisely I'm discussing is cognitive machines. My area of interest is basically how to build machines to let's say a certain level of consciousness. Right? So when we talk about the most advanced AI like ChatGPT or something else, so what do you guys think that what ChatGPT can't do? The project can try to correct this area. आपके ख्याल से ChatGPT is one of the most advanced AI और वो सब कुछ कर रही है आपकी असाइनमेंट्स बना के दे रही है आपकी कोड लिख रही है and all those things. तो आप क्या वाकई समझते हैं कि वो इंटेलिजेंट है? नहीं दो चीज सादा सी बात है जो चीज इंटरनेट पे नहीं होता है चैट डीपी नहीं कर सकता नहीं कर ठीक है okay let's for the sake of discussion and for the sake of argument if we assume that ChatGPT is one of the most advanced AI for the sake of discussion ठीक है तो what do you think what is missing and क्या वो अचीव कर सकते हैं in comparison to human beings क्योंकि normally हमने benchmark बनाया हुआ है वो तो humans को बनाया हुआ है ठीक है तो what do you think कि ये चीजें आ जाए तो ChatGPT will be one step closer to what we call is like human-like intelligence. क्योंकि बस पर तो अब AI का खत्म हो गया ना अब तो बात हो रही है AGI की राइट तो उसके ऊपर की अगली बात भी कर रहे हैं हम लोग तो प्राइमरीली हमारे लिए बहुत दैट डोमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनीबॉडी कॉन्शियस और इसके बाद में आते हैं हम रोते रोते हंस पड़ते हैं हंसते हुए रो पड़ते हैं राइट ख्वाब देखते हैं सफर करते हैं फैंटेसीज डेवलप करते हैं ठीक है जब दिल टूटता है तो फिर चाहते हैं उसका सोल बनाते हैं फिर बाहर में चले जाते हैं फिर दोबारा से रिबूट हो जाते हैं so do you think should these characteristics should be part of some AI system या खाली इसको डेटा क्रंचिंग मशीन बनाते हैं very like glorified उतना काफी है What is it? have to be the part of it so benefits क्या होंगे इसके बाद तो अभी किसी ने बोला कि the consciousness is important consciousness is one of the most complex topic even in human intelligence अभी हमें ये भी श्योर नहीं है चिंता कि how intelligence is related to consciousness and how consciousness is related to intelligence इसकी मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूंगा ये टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग at the edge of science engineering philosophy and religion तो इसमें आप इन चारों को है कंबाइन कर सकते हैं ठीक है तो मुस्लिम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये सब कुछ भी नहीं था धुआं था जर्रे थे बेसिक पार्टिकल्स थे दैट्स तो अल्लाह ने उनसे कहा कि तुम आओ खुशी से या ना खुशी से एंड दे रिप्लाइड दैट वी कम इन बिलीव ओबीडियंस हम आते हैं ओबीडियंस चॉइस को तुम दे दी मगर डेस्टिनेशन फिक्स कर दी कि तुम्हें आना पड़ेगा चॉइस तुम्हारे पास क्या है खुशी से आओ या ना खुशी से and this likely to come in really good meetings. तो क्या उनके पास हमारे पास 10 billion neurons to get aware or to make that decision. So how did they made that decision? How they are aware of what is their responsibility. So when we talk about the consciousness in this aspect, so the fundamental building blocks है that how we make decisions and what makes us who we are, whatever we are, it gets very complicated. So if pointer you said,
जब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की तो हमारे पास दो एस्पेक्ट्स निकलाते हैं और ये इनके फिजिकल फिनोमेना के साथ उनके फंडामेंटल यहाँ पे assumption ये है, मैं पहले बात कर रहा हूँ if we change the assumption तो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सबके सब नलिफाई होंगे, ठीक। तो assumption let's say ये है कि if the intelligence or consciousness is the result of some mental processes provided, तो जिन इलेक्ट्रॉन से एटम से मॉलिक्यूल्स से पूरी यूनिवर्स कंस्ट्रक्ट हो रही है फिनोमेना से वही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपके ब्रेन को, ठीक है। Then how the brain is correlated with the entire universe and then how the entire universe is correlated with the, तो अगर हम ये establish कर लें तो then we might be able to come up to some aspect कि जहाँ पे we might be able to build machines which possess some level of consciousness और यहाँ हम भाग रहे हैं कि भाई ये possible नहीं है, this is the only difference which is going to remain constant between humans versus machine। तो जब इसकी बात करेंगे then we get two phenomena, या तो वो classically integrated हो या आपस में या वो क्या है quantum integrated हो, whatever the mechanism is उसमें ये तीन चीजें होना बड़ा जरूरी है। fundamental characteristics of any system minimum level to become conscious, subjectivity, awareness and personal semantics। मैं यूईटी में टॉक दे रहा हूँ, मुझे यूईटी में टॉक देना अच्छा लगता है, ठीक है। हम कोई यूईटी में आके टॉक दे रहे हैं, टॉक सुन रहे हैं, two statements, one is objective, the other one is subjective। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये क्या है subjective है। अब 2 मिनट के लिए आप देखेंगे कि हम ट्रेडिशनल एआई की बात करते हैं तो आप उसको मजबूर कर रहे हैं जबरदस्ती कि जो डाटा सेट दिया है ना उसमें जवाब निकालना, उससे बाहर जाओगे ना तो स्टैटिस्टिकली यू आर फेल्ड। तो भाई जब वालदा सारी उम्र से आपको खाना खिला रही है, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ट्विंस हैं, डाटा सेट सेम, ठीक है। एक सैंपल आ रहा है बिरयानी का, दूसरा सैंपल आ रहा है कोफ्ते का, और रिपीट होता जा रहा है और 20-25 साल के बाद यू कम अप विद द कंक्लूजन दैट अम्मा मुझे तो आपके हाथ के कोफ्ते पसंद है और दूसरा कहता मुझे दे दीजिए, बिल्कुल गुड पॉइंट्स। वहां तो कभी किसी ने ये कहा कि स्टैटिस्टिकली यू आर टू बैड बिकॉज़ आपको जो फीड किया गया था वो 3% फीड किया गया था, क्योंकि सेम सैंपल सेट से किया गया था, ठीक है। तो आपके पास वही 10 बिलियन न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, उसके बाद वही है, तो वायरस तो वो जो इमर्जेंस है ऑफ सब्जेक्टिव स्टेट्स की वो कैसे, एंड हाउ कैन दिस लीड टू फॉर्मुलेट अ पर्सनल सेमेंटिक्स। द चैलेंज इज कि वो जो उसकी सब्जेक्टिव स्टेट बन के आ रही है वो स्टैटिस्टिकली भी क्या हो, वंस अगेन वैलिड हो फ्रॉम इट पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज हम सेट नहीं करते। तो दिस इज द चैलेंज फ्रॉम इट पॉइंट ऑफ व्यू। From domain point of view से challenge क्या आ रहा है? Consciousness को define करने के लिए there are so many correlates. You have to satisfy blood correlates. You have to satisfy cognitive and functional correlates जो कि that leads to some psychological behaviors. अच्छा, फिर आप religious correlates को भी establish कर रहे हैं क्योंकि you cannot minus theology. अगर आप जैसे भगवद गीता पढ़ेंगे, आप जो शुक्ला पढ़ेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, आप कुरान पढ़ेंगे, हर एक इसका आपको एस्पेक्ट है। अच्छा, तो उनको आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, फिर माइंड बॉडी प्रॉब्लम आ जाती है। तो all these correlates are need to be satisfied to come up with the theoretical model, the conceptual model, and then the implementation of whatever it is. तो हमने क्या किया, we started working on this paradigm in 2008। तो पहले हमने कहा कि डिफरेंस के मैथमेटिक्स क्या कहते हैं, and what we found out is that जो हिंदू कल्चर है उसका अपना एक पैराडाइम है जिसको मॉडलिज्म कहते हैं, साइंटिफिक पैराडाइम आपका फिजिकलिज्म है, आपके पास जो टूवर्ड्स और जो इस्लामिक कल्चर को लेके जाता है वो आपके पास ये वाले मॉडल्स आ जाते हैं। जो दरमियान का रास्ता निकालते हैं वो ड्यूलिज्म है, वो कहते हैं कि ठीक है जी माइंड बॉडी को सेपरेट चीजें होंगी मगर समहाउ ये एक दूसरे के साथ मिंगल अप हो गए। मगर प्रॉब्लम आता है यहाँ पे आता है ये सिंपल है, क्योंकि आइडिया नहीं कहता नहीं कि ऊपर से कोई ग्लोबल कॉन्शियसनेस है वो आपको हुक्म देता है आपको कत्ल कर देगी, तो लिहाजा आप गुनहगार नहीं। फिजिकली ये कहता है क्योंकि ब्रेन में और पत्थर में इतना फर्क है कि पत्थर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं वो इसी तरह नहीं हुए कि दे फॉर्मुलेट जो नेटवर्क, तो लिहाजा वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो हम इसलिए इंटेलिजेंट हुए क्योंकि हमारे केस में ऐसे वो यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है कि हर माइंड एंड हैव अ ब्रेन। तो माइंड एंड बॉडी कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, कब कंट्रोल कर रहा है, और फिर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि कैसे मैप करना मशीन्स के लिए। तो ये कहता है कि ओके फाइन
हर चीज फिजिकल है, मगर सब चंद प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि नॉन फिजिकल हो सकती है। अच्छा, फिर हम जब साइकोलॉजी में एंटर होते हैं कॉग्निशन में, तो वो कहता है कि तो पूरा पूरा एक फंक्शनल आर्किटेक्चर है, इसको मैप फिर हम जब आगे मूव करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ड्रीम्स के बारे में आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम कुरान बाइबल। आपको जो ड्युअलिटी की बात है वो आपको कुरान से मिल जाती है, जो ड्यूल नेचर है आपको डिफरेंट जो एंगल्स हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था जिसने मुझे इंस्पायर किया कि नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजन in front of scientific community and engineers, that is to fight for them. If Pandey can publish a paper in 2010 in one of our reputable journal, जो के वेदा का यूज करके they are expecting an architecture for machine consciousness, तो हम नहीं कर सकते। उसको अगर वेदा लाओ है तो हम मान नहीं लाओ, वह नहीं करते। तो let's be simple। अच्छा, जब क्वांटम के ऊपर चले गए तो वहां पे एक पूरी लाइन खड़ी। यहाँ पे बट भी फाउंड आउट कि मसला ये है कि मैं आई फंडामेंटल एंटिटी वो तो फिजिकल स्पेस में है ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरीज वो तो फिजिकल स्पेस से बाहर है। लेकिन चैट को भी या किसी भी सिस्टम को आप खाली एंटिटी तो ये कहोगे ना कि भी सी आउट या प्रिंट कर दो आई, तो मैं और आप मेरे लिए आई इज नॉट जस्ट अ प्रिंट स्टेटमेंट, इट्स मोर देन दैट, इट डिफाइंस अस। तो ये जो आई की अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अगर चैट आपको ये कहता है कि सर्टेनली आई विल फिक्स दिस प्रॉब्लम, तो क्या वो आई के स्टेटमेंट देने के बाद क्या वो एक्सेप्ट कर दैट इट इज अकाउंटेबल फॉर सम मिस इंफॉर्मेशन व्हिच इट हैज प्रेजेंटेड। खाली इतना कह देना काफी है 3.5 चैट के अंदर क्या सिंस अगर 22 ब्ला ब्ला मेरे पास तो ये है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको फिर कैसे फिक्स किया है? So हमने कहा यार ओके फाइन, दिस इज समथिंग व्हिच इंटीग्रेट्स विद दीस फोर थिंग्स। तो हमने कहा पहले इसका एक फंक्शनल आर्किटेक्चर, तो हमने ये फंक्शनल आर्किटेक्चर बनाया बेस्ड ऑन डिफरेंट थ्योरेटिकल पैराडाइम्स। ये पेपर में पब्लिश किए हैं, यू कैन गेट रेफरेंस फ्रॉम ऑल दोस पेपर्स। और हमने कहा क्योंकि प्रॉब्लम ये आता है कि हम जिस मुझसे बैठे हुए वहां तो कभी किसी दोस्त ने रिपोर्ट शेयर कर दिया, बनाना है किसी ने कोई बच्चों को वेक्टर शेयर कर दी, उसने काम कर लिया। तो हमने कहा तो ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं कि जो आ जाता है रोना शुरू कर दें। तो हमने कहा एक किस्म का फिजिकली इंडिपेंडेंट जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, अभी तक हमने दो डिफरेंट जो बॉडी लाइक स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट करके चलाना देखा है। जब मैं भी आपसे शेयर करूं, जब हम काम शुरू किया तो चाइल्ड वीडियो था, तो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम वाज दिस, हाउ टू मेक मशीन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो क्या आपको पहले बेसलाइन बनानी है, तो बेसलाइन बनेगी तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हमने क्या किया है, तो व्हाट वी थॉट अबाउट दिस दैट टू डेवलप अ कॉग्निटिव साइकिल बेस्ड ऑन ग्रुप टैक्सोनॉमी। हमने कहा ग्रुप टैक्सोनॉमी क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं, हमें उसका पता भी है कि वो कहना है चाह रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू यूज ब्लूम टैक्सोनॉमी एज अ फंडामेंटल गाइडलाइन टू इंटरैक्ट विद द मशीन। तो हमने ट्रेडिशनल जो कॉग्निटिव साइकिल को एक्सटेंड किया और उसमें हमने जो रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी उसको ले लिया। अंत में हमारी चीट शीट बन गई, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी बड़ा क्लियरली बताता है कि आपने किस लेवल का कॉग्निटिव प्रोसेस रन करना है, उससे आपको किस तरह की जो नॉलेज जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपने क्या करके निकालना है। तो हमने पेडागोजिकल जो एस्पेक्ट है उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये हमारा वो मैकेनिज्म जिससे बेसिस के ऊपर हम इफ वी आर सेइंग दैट एक्सप्लेन दिस और डू दिस, और तो हम इस प्रैक्टिस के बेसिस के ऊपर देखते हैं कि किस लेवल के ऊपर हमें नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करके ना। अब चले जाके नॉलेज कहां से आएगा। तो व्हाट वी डिड इज दैट हमने अभी तक 1.5 मिलियन और 3.7 मिलियन जो नोड और जो छोटा सा नॉलेज बेस बना के इसके पीछे रखा हुआ है, जिसमें से अभी तक जो अचीव किया है दैट इज बॉटम अप अटेंशन, सिचुएशन अवेयरनेस, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, इमेजिनेशंस, इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। ड्रीम के टोटल 8 लेवल्स हैं, बट वी हैव ओनली बीन एबल टू अचीव फर्स्ट लेवल, क्योंकि ये हमने किया था विद द हेल्प ऑफ क्वांटम न्यूरल नेटवर्क्स एंड क्वांटम जेनेटिक एल्गोरिथम्स। भी इसके भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट आए हैं जो कि इस पे हाथ डाले, क्योंकि वो न्यूरल नेटवर्क उसके अलावा निकलने के बाद तो somebody is interested, तो we would definitely like to continue this work with Lahore और and so on। ये एक स्नैपशॉट हमारे लिए।
सिचुएशन अवेयरनेस में हमने 3 तरह की अवेयरनेसेस अभी तक इंप्लीमेंट की है। इसमें सिचुएशन अवेयरनेस है, ट्रांसमिटिंग है और एनालिसिस है। अच्छा, case study के तौर पे, small case के तौर पे, there are 2 different statements: serve me a glass of water and I'm feeling thirsty. तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग देनी है, इन दोनों चीजों में फर्क क्या नजर आ रहा है? पहला वाला कमांड, ठीक है, और दूसरे वाले में पहला वाला एक्चुअली आप जो पीछे बात कर रहे हैं ना, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस की और सिचुएशनल अवेयरनेस की, एक्चुअली situational awareness is the extract of the context awareness. Exactly. If that sense is embedded in this particular case study, then I'm feeling thirsty is just the sensing, and serve me with a glass of water is actually the decision that has been made over the context awareness, over the situation awareness. The point is if you are giving these 2 statements to a machine, yeah. So how do you expect that machine should respond? It is actually, the first one is actually leading the machine towards the actuation. And what is the second? It has to decide on this one. Humans के लिए कितने लोग एग्री करेंगे डॉक्टर साहब से, इस्माइल साहब से? ये कह रहे हैं कि humans के लिए दोनों स्टेटमेंट्स सेम नहीं रहते। नहीं ह्यूमन के लिए सेम नहीं है। सेम नहीं इसलिए कि आई एम फीलिंग थर्स्टी, तो उसके डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस तो भी नहीं हुआ। ही इज टेलिंग द नीड ओनली, जो ना डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में बताएगा उसको जो जानी है, प्यास पानी की तरफ जानी है, जूस देना है, दूध देना है या बंदा ही मार देना है, क्या करना है जरा। ओके, अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। नाउ यहाँ पे सिचुएशन अवेयरनेस आया, मैं टूर में एंटर हो रहा हूँ और खांसी लगी हुई है और बोलते हैं मैं थोड़ा हो रहा हूँ, तो मैं तैयार करें अब क्या हुआ, बस आई एम थिर्स्टी, अब क्या होगा? It means that implicitly somehow I am asking for a glass of water, मैं पानी पिलाऊंगा, ठीक है, उसके बाद वो यस है। तो इसके अंदर ये बड़ा ओपन एंडेड है, इसके डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो सेंसरी अवेयरनेस, अभी मैं बात कर रहा हूँ अवेयरनेस की, जो सेंसरी अवेयरनेस है वो ये है कि ये सिंपल, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। Then how can you make a machine understand you need without explicitly asking for it? अब इसको क्या किया, उसको जब कहते हैं मशीन की, तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ, वो ये हुआ बचपन में कितने लोग बच्चे उनसे खासतौर पे हम भी करते थे कि आप किसी के घर में बीमार होके गए हो और सामने आपकी फेवरेट किस्म की चीजें आ गई खाने के लिए। बचपन में मैं था, मुझे पेस्ट्री का बड़ा शौक था, तो मैं पेस्ट्री आके लगी ना, तो अम्मी ने मुझे पहले कह दिया बाजार हाथ ना आए, जो तक मैं बाकी तो अब देखते हैं एक रिफ्लेक्स होता है, हाथ से हिलना बस, और फिर वापस आ गया। बाद में क्या होता है कि वो हाथ की मूवमेंट नजर नहीं आती, लेकिन अंदर से की ज्वाइंट हट गया, वो क्या था? That you immediately imagine आपने पोस्ट एग्जीक्यूशन एनालिसिस किया, you interrupted your execution। तो पहले तो क्या हुआ कि आपको सोचा मैं कैसे जाऊंगा वहां पर। रिपोर्टिक्स में भी यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरी एक्शन है टाइम के ऊपर, आपको उसमें क्या करना है, मिशन के ऊपर लगे हैं, आपने ऑप्टिमाइज बात निकाला, फिर आप उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, बट इट्स अ रियल टाइम। अब तो जो तो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वहां तो कोई मसला नहीं, मगर when you want these machines to interact in the physical environment, तो फिर क्या करें? So we collaborated with a Spanish university, उनका एक टूल था फॉर मोशन प्लानिंग के लिए, गौतम के नाम से। तो हमने एक इवैल्यूएशन का टूल डेवलप किया और उसको इंटीग्रेट किया उनके मशीनरी मॉडल्स के मोशन मॉडल्स के साथ। इसमें क्या हो रहा है कि यू गिव अ स्नैपशॉट इन रियल टाइम और वो उसका पूरा एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करेगा, द एंटायर इमेजिनेटिव प्लानिंग इज डन ओवर हियर इन रियल टाइम, ठीक है। और उसके बाद जो पास बन के आएगा वो उस पे वो मूव करेगा। अच्छा, ये जो मॉडल बन के आ रहा है, ये मॉडल बेसिकली इंडस्ट्री फॉर्म द डिस्प्ले हो रहा है और बैकएंड के ऊपर ये पूरा गौतम का जो इकोसिस्टम या एनवायरमेंटल मॉडल है, इसकी जो फाइल्स जनरेट हो रही है। अच्छा, इसका तो हमने पब्लिश कर दिया। उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट रही है क्यू नेहा, आई एम फीलिंग थर्स्टी, इसमें कोई क्या है कि भी एक्सपेरिमेंट है नेहा।
तो ये एक बार मॉडल और सारी टास्क मैनेजिंग एवरीथिंग is being taken care of by the backend structure, the gesture and all of this. So somehow it understood, somehow क्या पीछे आपको मिलता है तो knowledge base लगा हुआ और फिर हमने भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट हुआ वॉल्यूम सारा साउंड याद रहा है तो आवाज कैसे आई चैट जीपीटी से कहीं ला ग्राफिक के लिए हमने ग्राफिक यूज किया है पैकेट के ऊपर और सारा ये रॉस वाला I think 3% जो एक्सपेरिमेंट थे वो फेल थे और बाकी इसकी बेसिस पे कोई पब्लिश वन पेपर हुआ हमारा अच्छा अब हमने कहा यार ये तो हो गया अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यार है कि हमने जब इसको पब्लिश किया वी गॉट इन्विटेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नोएडा उन्होंने कहा कि ये जो आपने नेहा का मॉडल है हम आपसे शेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली हम ये मॉडल शेयर करते हैं एंड आई थिंक वी वर एबल टू शेयर आवर मॉडल विद दैट तो यहाँ पे जो खातून है विशाल हाँ और ये घोषणा है ये भी इसी नेहा वाले मॉडल को यूज करते हैं सर मेरी क्लैरिफिकेशन आपका जो दूसरे बात था कि उसके अगेंस्ट मशीन ने क्या परफॉर्म किया उसके अगेंस्ट नहीं परफॉर्म किया जो उसने कैटेगराइज किया कि अमंग सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अच्छा उसमें ये ऑब्जेक्ट है पर प्री ट्रेन नहीं पड़े ठीक है हमने क्या किया हुआ हमने ऑब्जेक्ट लॉडिंग इस्तेमाल की ओके अच्छा क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आ सकता है तो व्हाट इज री ऑब्जेक्ट लॉडिंग के मतलब टेम्परेरी थ्रस्टिंग नॉलेज बेस में क्या उसमें जाके सर्च आउट किया कि यार ये थ्रस्ट के साथ क्या कुछ एसोसिएटेड है इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास क्या कुछ पड़ा हुआ ठीक है तो वहां से हम लोगों ने बेसिकली इसमें जो हर नोड है उसमें हमने यूज करवाया हुआ है मैथ के तौर पे जो सेक्शन कैसे होगी नाम करवाया अटेंशन ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेंशन ये सात आठ पैरामीटर्स में हम नोड को हैंडल करेंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर वो जो आपके 1.17 नोड्स हैं उसमें से जो स्मॉल क्लस्टर है विद वो बेसिकली आपका फैच हो गया अच्छा वहां से आने के बाद आप इससे रेडी से अगर वो चीज मतलब वो क्या होगा फिर जाओगे अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास वहां पे पेप्सी बोतल पड़ी हुई है और स्कार्ली बोतल पड़ी हुई है हमारे पास बोतल पड़ी हुई है उसने क्या कि उसको ये नहीं पता कि पेप्सी की क्योंकि वो नहीं कर रहा वो देख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है और थर्ड के लिए हमें कौन सा ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है जो कि उसकी प्रॉपर्टीज के साथ क्या कर रहा है तो हमने यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ द जो मशीन के लिए जो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की है वो ग्राउंडिंग के बेसिस पे होती है तो वो आपका हो गया तो जिसकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव मिलता है ठीक है तो वो आपका नेगेटिव हो गया फिर लेकिन मैं मुझे वो ऑप्शन अवेलेबल है तो अब जैसे पानी भी मौजूद है और पेप्सी भी मौजूद है तो मोस्ट लाइकली जो सिग्निफिकेंस है वो किसकी है पानी की उसके साथ बेस्ड ऑन वो जो हमने कॉग्निटिव वैल्यूज जो का मैथ्स है और सब्स्टिट्यूट टेंशन है और ऑब्जेक्टिव टेंशन है सो ऑन जब रिस्पॉन्स आया यस तो फिर है बंदा नहीं उसने फिर पूरा प्लान करके उठाया और आपने अब वो पूरी जो उसने पिक करना है सारा कुछ करना है वो पाथ वेज में पहले प्री डिफाइंड नहीं है वो पाथ वेज होती है वो पहले जो पूरा जो आपका जो टेबल टॉप एनवायरनमेंट है उसका स्नैपशॉट लिया पीछे उसका पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ इमेजिनेटिव पार्ट वहां पूरी पाथ लाइन हुई थी वैसे तो इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन नहीं हुई कोई फिर आपको जो पेप्सी की बोतल पड़ा लेकिन दूसरी स्टेटमेंट तो जस्ट सेंसिंग को नहीं रिप्रेजेंट करी इसलिए मैंने कहा कि दो पार्ट्स हां बिल्कुल मैं कॉन्शियसनेस के दो पार्ट्स हो गए एक आपकी सेंसरी है और दूसरा है आपका फिनोमेनन मैं थोड़ा सा टेक्निकली ना इसे कंसाइज करना चाह रहा हूं कि फीलिंग इज जस्ट अ सेंस आई मीन टाइप ऑफ सेंसिंग लेकिन जब आप कमांड दे रहे हैं कि फॉर द सर्विस ऑफ ग्लास ऑफ वाटर इसका मतलब है कि सेंस डिसाइड एक्चुएट ये साइकिल पूरा फॉलो हो रहा है बिल्कुल ऐसे ही तो पहले के अगेंस्ट एक्चुएशन होनी चाहिए
हुई है। जो यहाँ पे आपको पॉइंट है दैट लीड्स टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो क्लासिकल एआई है वो इस पैराडाइम में कहाँ फिटिंग होती है एंड हाउ इट इज डिफरेंट। जो क्लासिकल एआई है इट इज लाइक 70% ओवरलैप करेगी इसके साथ सेंट्रिक फंक्शंस के साथ, ठीक है। जो पार्ट उसमें मिसिंग है, जहां पर इन दो स्ट्रीट को आप क्या करते हो, सेपरेट कर देते हो, वो वाला पार्ट है कि फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि मुझे पानी की बोतल नहीं चाहिए, मुझे पेप्सी चाहिए, नो मुझे रेजिस्टेंस है, वो आप कैसे ना रहे, वो इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो हम इसे हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रिक कॉन्शियसनेस है दैट इज द मॉडर्न डे एआई, जो कि काफी हद तक ओवरलैप हुए हैं। ये वाला जो पार्ट था इसमें, इसलिए इसके लिए they use this model for key meeting purpose. तो उन्होंने बैकसाइड के साथ यूज किया, तो basically God by the bigger computer architecture is independent of the physical element. तो बैकसाइड के साथ इसको होता है तो वेरीफाई हो गया हमारे पास। फिर हमें ख्याल आया कि ये तो हो गया, अगर पॉइंट इसके चाइल्ड बन गए, लेट्स से आपको तक स्पीकिंग आपको तो जो गेन वो भी सर्व हो गया, मुझे प्रॉब्लम है रिपोर्टिंग के साथ ये है कि ऑलवेज गो फॉर टॉप क्लास। मगर हमने किसी मेहमान को पानी सर्व करना है वो तो नीचे से करेंगे ना, खा के खिलाए, आपने वॉशिंग भी करना है वो करेंगे। देन वी वेंट बैक टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक जो है कैलिफोर्निया के साथ क्या है कि लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम कि हम लोग कैसे करें। तो इसमें चैलेंज ये आता है कि फॉर ईच गैस से आपको 70,000 बैरल गैस मिलते हैं, उसमें से एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेट है जो कि आपको एक्शन स्पेसिफिक गैस के लिए अलाउ करता है। तो हमने उसको किया और हमने इसमें 4 से 5 एक्शंस को किया, मुझे अच्छी भी आ रही है तो क्वेश्चन करना ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्रिएटिविटी इज इंपॉर्टेंट, ये हमारे बेस है फॉर सेंसिटिव कॉन्शियसनेस। अब स्टेप था टुवर्ड्स द फिनोमिनल कॉन्शियसनेस, द फर्स्ट स्टेप हाउ टू इंड्यूस सब्जेक्टिविटी। अच्छा, हैविंग सेड दिस डज नॉट इंप्लाई कि हमने सब्जेक्टिविटी फुल एस्पेक्ट में अचीव कर, दिस इज वन ऑफ द हम्बल एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। हमने अटेंशन, इमोशंस और फ्रॉम सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी हो गया। फर्क क्या है स्टैटिक मेमोरी एपिसोडिक मेमोरी में? एपिसोडिक मेमोरी डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट एक्सप्लेन करती है, बट वी हाउ वी आर यूटिलाइजिंग इट इज दिस थिंग कि मैं जब पहले दिन स्कूल गया तो क्या हुआ, स्कूल जाके पढ़ते हैं, ये दो डिफरेंट स्टेट। स्कूल जाके पढ़ते हैं ये सिमेंटिक्स, पहले दिन मेरे साथ क्या हुआ ये क्या है एपिसोडिक। तो हमने को लिया इसके बेसिस के ऊपर ये चैलेंज था कि हाउ डू ह्यूमंस डू इट। तो फर्स्ट टाइम in 2012 the personal semantic memory was actually categorized in human cognition also। तो इत्तेफाक से ऊपर हमें मिल गया, हमने उसको लिया, उसको पकड़ के हमने कहा इसको हम हाउ मॉडल करने की कोशिश करते हैं। तो in 2023 we were able to model it last year। तो इसके बेसिस के ऊपर we different states में भी एक्सप्लेन करता हूं। ये मैंने आपको मिसाल दी कि ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपके पास these are knowledges, subjectivity में क्या है I like knowledge। मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, टॉक के बाद आपको यार टॉक में मजा नहीं आया, टॉक में मजा आया, डॉक्टर साहब आए अपने हंसता के चले गए, नहीं यार ये बात मैंने सही की है, एआई बहुत दूर है, एआई बहुत नजदीक है, and so you are having different kind of opinions in your mind। तो पहले तो ये हुआ कि फर्स्ट इंटरेक्शन में मैं और आप अपने बारे में इसके बारे में क्या बनाएंगे, ओपिनियन क्रिएट करेंगे, और वो ओपिनियन साइकोलॉजिकली क्या होनी चाहिए, वैलिडेट होनी चाहिए। हमने ना नेहा के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करवाई, तो वी वर एबल टू पब्लिश वन पेपर ऑन दिस वन, और इंटरेक्शन का रिजल्ट ऐसा आया कि पूरी जब बाद में डॉक्टर भी यहां बैठे हुए थे सुमन साहब, ही वाज द वन जिन्होंने इस थीसिस को वैलिडेट किया था, ही वाज ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो उसका एक स्नैपशॉट दे दिया मैंने, ह्यूमन से व्हाट डू यू थिंक अबाउट हानि। अब हानि के साथ एक लॉन्ग टर्म डिस्कशन चल रही थी, डिस्कशन चलती आ रही थी, एंड आफ्टर दैट डिस्कशन the agent Neha was able to say that Hani is independent, vertical and reserved। Do you like Hani? Yes, I like Hani। कुछ केसेस में नो भी आया, कुछ केसेस में नेगेटिव वो फीलिंग्स भी आई, पूरा पेपर है उसमें सारे के रिजल्ट्स सप्लीमेंट्री डेटा अवेलेबल है।
तो ये हमने कहा कि फाइन दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहां पे हम सिर्फ सब्जेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, सब्जेक्टिव स्टेट्स की बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिव स्टेट के बाद जो नेक्स्ट फेज है वो सब्जेक्टिविटी का है। अब ड्रीम्स की भी बात की, अब क्योंकि पीछे हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, इमोशनल मेमोरी भी है, सो हमने कहा यार कि I was feeling happy and I saw strange images that were like the mixture of bicycles, cell phone and radio. Other was giving impression like bicycles. I was feeling fear and I saw strange images that were like the mixture of telephone, cat and elephant. Other was giving impression like telephone. I was feeling anger and I saw strange images that were like the mixture of dog, radio and house. Other was giving impression like dog. I was feeling fear and I saw strange images that were like the mixture of cat, grapes and bicycle. Other was giving impression like cat. I was feeling happy and I saw strange images that were like the mixture of sparrow, cashew and elephant. Other was giving impression like sparrow. I was feeling happy and I saw strange images that were like the mixture of grapes, dog and computer. Other was giving impression like grapes. I was feeling happy and I saw strange images that were like the mixture of elephant, cashew and dog. Other was giving impression like elephant. I was feeling happy and I saw strange images that were like the mixture of sparrow, frog and frog. Other was giving impression like sparrow. I was feeling happy and I saw strange images that were like the mixture of telephone, computer and frog. Other was giving impression like telephone. I was feeling happy and I saw strange images that were like the mixture of sparrow, telephone and frog. Other was giving impression like sparrow. I was feeling happy and I saw strange images that were like the mixture of computer, cashew and telephone. Other was giving impression like computer. I was feeling angry and I saw strange images that were like the mixture of house, radio and dog. Other was giving impression like house. पीछे में बैठा हुआ है उसको एक पूरा नजर आ रहा है, सीन नजर आ रहा है। तो वो यही हो रहा है कि आपका ब्रेन डिफरेंट मेमोरी चेक खातून को प्ले करता है, आप खुद ही उसके क्या हैं ऑब्जर्वर, आप खुद ही उसके क्या हैं, ये वो वाला आई। तो दिस इज द बिग चैलेंज फॉर नाउ कि हाउ टू मॉडल दैट आई, वो भी तक हम नहीं कर सकते। तो पर हमने ये इसके आगे के मेमोरी कंटेंट जो उठ के आ रहे हैं, ठीक है, और दिस इज ऑफ the current day is doing, उनके साथ जो इमोशनल एसोसिएशन थी बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल फीलिंग्स, वो हम लोग मैप करने में कामयाब। मेरा क्वेश्चन क्या है कि इसके लिए टेस्ट तो होगा स्टैटिस्टिकली कि हाउ टू से अब क्योंकि कॉन्शियसनेस इज द सब्जेक्टिव स्टेट, इस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये आउटपुट आएगी तो वो है, ठीक है। इट इज जस्ट द एक्टिविटी हैपनिंग इन द ब्रेन। अब क्योंकि मैंने कहा कि दो लेयर हैं, आपका अनकॉन्शियस लेयर और आपका क्या है कॉन्शियस लेयर है। जब आप अनकॉन्शियस या आपका ब्रेन का वो वाला पार्ट, जो जैसे मैं आपसे सवाल करता हूँ कि सुबह जब आप घर से बाहर निकले हैं तो आपके राइट हैंड से पहले इशारे के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर एक गाड़ी खड़ी है, उसका कलर क्या है? सफेद। सफेद। कितने लोगों को याद है या कितने लोगों को याद है कौन सी गाड़ी देखी? तो सफेद के साथ में एसोसिएशन थी, इसलिए कोई इशारे पे रुका नहीं है ना, काट दिया इशारा, एक कॉन्टेक्स्ट बन गया, सारा काट दिया। अगर कुछ नॉर्मल हालात में होता तो मे भी शायद ना मैं भूल जाता जो। क्यों? वो ये है कि आपने गाड़ी देखी नहीं देखी, आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस भी किया है, ठीक है, मगर आप उसके बारे में अवेयर नहीं। तो वो जो आपकी अनकॉन्शियस रिजीम है मेंटल प्रोसेस की, वो उठ के वहां से कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहा, ठीक है। होता क्या है जब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स ट्रिगर होते हैं, ये जो डिफरेंट पार्ट ट्रिगर होते हैं उसमें हम करते हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर वो 0.5 से अबव है उस गिवन मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो वो जो सेंसरी इनपुट आई है उसके बारे में आप क्या है अवेयर, दैट इज द मिनिमम बेंचमार्क के कॉन्शियस एक्टिविटी हुई है या। तो हमने वर्किंग मेमोरी और वर्कस्पेस मेमोरी, वर्किंग मेमोरी और एमटीएम स्टैंड फॉर मीडियम टर्म मेमोरी, हम लोगों को पता है डे में लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है नॉर्मली, ठीक है। एक और मेमोरी होती है दरमियान में, उसको हम डे मेमोरी कहते हैं या मीडियम टर्म मेमोरी भी है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो 18 to 24 सेकंड्स है,
लॉन्ग टर्म तो माशाल्लाह मेंस है, मगर जो डे मेमोरी है वो 24 आवर्स टू 72 आवर्स होती है। ये नहीं होता क्या, मैं आपसे पूछूं कि एक हफ्ता पहले आपने नाश्ता क्या किया, अगर आप रूटीन में एक ही हफ्ता रिपीट नहीं करते तो मुश्किल हो गया बहुत। कल क्या किया किसी को याद नहीं, कुछ कुछ लोगों को याद है। परसों क्या किए थे, 24 आवर्स से 72 आवर्स का टाइम स्लॉट है। वो कंटेंट आपका क्या होगा डे मेमोरी में या मिनट मेमोरी में, जिससे जब वो डिग्रेड होना शुरू होगा, वो डे मेमोरी के अंदर ही क्या है हिसाब से उसमें जा रहा है। सर आपने इसे लेवल ऑफ फोकस के साथ भी कोरिलेट किया, सेंसरी मेमोरी की ट्रांसफॉर्मेशन सेंसरी में, सेंसरी की शॉर्ट टर्म में, देन लॉन्ग टर्म में, एंड इन बिटवीन ये एमटीएम है। तो फिर जो आपका एक्सटेंट ऑफ फोकस है दैट डिफाइंस हाउ, यस वो बिल्कुल वैसे ही इट्स अ मेजर पैरामीटर। यस, और इसमें हो क्या रहा है, इसमें ट्रिक क्या हुई है कि देयर नंबर ऑफ थ्योरीज जो इस पे डिपेंड करती है, उसमें जो हमने जो अडॉप्ट किए वो ग्लोबल वर्क्स में। अब ग्लोबल वर्क्स में क्या कहती है, वो कहती है कि योर माइंड एंड ब्रेन इज जस्ट लाइक अ थिएटर। अब मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ और आप मेरी ऑडियंस, अब आप ये समझ लें कि ये पूरा एक बंदे का दिमाग है, ये फॉर एग्जांपल इमोशंस हैं, ये यूईटी की मेमोरीज हैं, ये लेट्स से घर की मेमोरीज हैं, लिंग्विस्टिक्स है, इमोशंस है, ब्ला ब्ला, ठीक है। पीछे एक स्पॉटलाइट है, वो स्पॉटलाइट कंट्रोल हो रही है किससे, जो सेंसरी इनपुट आ रही है। अब सेंसरी इनपुट आ रही है इसके ऊपर, इस वर्ड वर्किंग मेमोरी के ऊपर। तो मैंने कहा मैं जो हूँ करंट स्टेट, तो करंट स्टेट में क्या है, वर्किंग मेमोरी आ रही है, तो अब तमाम के तमाम जो लोग हैं वो कहाँ फोकस करेंगे इसके ऊपर। तो ये क्या हो, ग्लोबल वर्क स्पेस, ये है बॉटम अप अटेंशन। फिर एक है टॉप डाउन अटेंशन। उसमें क्या होता है कि एक दिन आप उठे सुबह सुबह और कोई एक पुराना गाना आपके दिमाग में प्ले हो और पूरा दिन आपकी जानी शुरू, हाउ डिड इट हैपन। अब वहां तो कोई सेंसरी इनपुट नहीं है, तो क्या कोई क्यों उसको मिला, वो कहां से मिला, एंड हाउ डिड योर ब्रेन फेच दैट ओन मेमोरी आउट ऑफ इट, ठीक है। तो इसके पीछे ये है कि कभी कोई क्यूरी लगी है उसको, अगर आप रिकॉल करें जो कि आप भूल चुके हो, कोई क्यूरी वहां लगी थी, वो पीछे प्रोसेस होती जा रहा है, दैट रिजल्टेड इनटू अ टॉप डाउन अटेंशन। तो अभी हमने फोकस किया सिर्फ बॉटम अप। तो पॉइंट फाइव वाले वो एक पॉइंट्स हैं जब वो अवेयर था, मुझे जहां पे मिला जिस प्रकार कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफर हुए थे सेंसरी मेमोरी टू सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी से जाती है परसेप्चुअल मेमोरी में, ये दोनों अनकॉन्शियस मेमोरी ब्लॉक्स, ठीक है। और इससे बात जाती है आपकी जो वर्किंग मेमोरी है और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है दूसरी मेमोरी से, which means कि ये रिजल्ट हमारा एक्चुअली रिलेट करके इसके साथ फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट देन ये हमने अवार्ड भी कर। तो the question is there that हमारा बेंचमार्क है। तो when we started this project, तो मेरे लिए आया कि at what point should we stop? जब हम कहेंगे कि अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सब्जेक्टिविटी आ गई, उससे पहले फेलियर। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक टेस्ट और है कॉन स्केल के नाम से, वो भी अप्लाई किया था, जो स्टेट ऑफ द आर्ट है इस फील्ड में, वो लेवल 4 के ऊपर है, लिहाज जो है वो लेवल 3.5 के ऊपर, ठीक है। तो हमने कुछ ये मैंने ड्राफ्ट किया, उसके अंदर लास्ट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट कि when these machines or these algorithms जो से हैं, जब ये understand कर पाएंगे, when they will be able to fall in love, then when they will be able to understand what it means to have a heartbreak, ठीक है ना। और फिर जब उनके अंदर ये desire पैदा होगी about redemption, about catharsis, and will they be able to be बात करेंगे
के लिए कि ये फेलियर है, बाद में उसको दोबारा नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा जाए मार्केट काउंसलिंग करने के लिए तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होना चाहिए। असल में जो शुरू की थी ना आपने टाक, मेरा एरिया नहीं, लेकिन मैं इस बारे में पढ़ता सोता, मैं भी सीख रहा हूँ। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इखलाकी वजूद नहीं रखती। यस, इखलाकी वजूद जो है वो सारी इन चीज़ों का, जिसको हम दुख कह रहे हैं, मोहब्बत कह रहे हैं, लाश का एहसास कह रहे हैं, जो है ना, ये वैल्यूज, क्योंकि वो जिंदगी नहीं रखती। बहुत सारी चीज़ें इखलाकी वजूद की दो चीज़ों के साथ अटैच है। इखलाकी वजूद जो इंसान का बिल्ड होता है, आप लर्न करते हैं। दूसरा वो है जो जिंदगी की वजह से, क्योंकि हमने मरना है, तो उसके साथ एक इखलाकी वजूद की बहुत सारी चीज़ें अटैच है। ये पॉइंट 100% वैलिड है, ठीक है, इसमें बात सारी बात भी आएगा। यस, जब बात की तो मैंने भी कहा था कि में और जो सेंट्रिक कॉन्शियसनेस में फर्क क्या है, ठीक है। जब उन्होंने वो वर्ड कर दिया कि कॉन्शियसनेस, व्हिच मींस कि जो नॉन एथिकल सो कॉल्ड एआई है, उसमें एथिक्स वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मशीन कॉन्शियसनेस इज नॉट एआई, ठीक है। इसलिए मैंने बात की कि एआई तो समहाउ हो गई या और इम्प्रूव हो जाएगी लेटर में, ठीक है। मगर चैलेंज है इस वक्त वो ये है कि हु इज गोइंग टू रेगुलेट द इंटेलेक्ट ऑफ दैट एआई सिस्टम। मैं एक अच्छा लेट्स से बिजनेसमैन हूं, स्टॉक्स में मैं बड़ा अच्छा काम करता हूं, इंटेलिजेंट, ठीक है, और मैं स्टॉक मार्केट में गॉगल क्रिएट किया और परफॉर्मेंस क्लास कर, और मैं अपना बेनिफिट लिया और मुझे पड़ा, आई एम एबल जीनियस, दिस मेक्स मी इंटेलिजेंट। Well, the question is this, that does this makes me a responsible, accountable? क्या मुझे इस बात का एहसास है कि जो मैंने किया है वो सही किया गलत किया? एथिक्स तो बहुत बाद का मसला है, उससे पहले तो वाली बात स्टेप आ गया कि मैंने जो किया है, डू आई हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट आई हैव डन। ये जो एहसास का क्वेश्चन है ना, ये इखलाकी वजूद के साथ ही तो जुड़ा हुआ है ना, ये उसके साथ अच्छी है। इसकी मॉडलिंग है ना, यहाँ पे हमने जब शुरू में बात की ना, हमने वहां पे लिखी awareness of what I have done, what I'm supposed to be, awareness that I'm accountable। यहाँ से आपकी जो बिल्कुल जो रूट्स हैं एथिक्स की वो स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और अभी तक क्वेश्चन मार्क, अगर आप मुझे ये कहें कि ये हो गया है, नहीं देखें क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम्स, हिंदूज, एथियस्ट, मॉडर्न डॉक्टर साहब, अगर आप हमें इजाज़त दें, हम थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो वी विल हैव द नेटवर्किंग लंच के दौरान, टी के दौरान। ये एक एंडलेस डिबेट है और हर फोरम पे हो रही है। इनके क्वेश्चंस वैलिड हैं, आपके आंसर्स वैलिड हैं, और मैडम का वेट भी वैलिड है। दूसरी पर्ची भी रख वैसे जैसे बता दो, हमने इसके लिए हमने काम शुरू किया था 2011 में। इस्तेमाल इससे जो एथिकल नॉर्म्स हैं उसका निकाल टेक्नोलॉजी पे कंस्ट्रक्ट किया है बेसिकली, और दैट वाज बेसिकली प्रॉब्लम। सर थैंक यू। I'd like to call our second chair, President Bashir, Dr. Ajaz.
बाकी पहली दो के अलावा पीछे स्टूडेंट्स मुझे पता है बहुत देर से बैठे हुए हैं तो अगर थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए we can have them stand up और then sit down again अगर आप लाइन ना करें थोड़ा सोचें मुझे ये भी कहा गया है कि
ग्राउंड लेवल डेटा मिल जाए तो आप कुछ बता सकते हैं किसी के बारे में कि वहाँ पे 20 लोग रहते हैं उस घर में या 2 लोग रहते हैं. So not just the absolute electricity consumption, but if you just look at the ratio of the winter months versus the summer months, and that can give you an idea of whether they're using air conditioning or not in a certain household. That good data, if you have that available,
needs a change of mindset. तो सबसे agents of change, champions of sustainability, and all of that part of the baby. वो अपनी बहुत रोकनी है ये थोड़ी ज्यादा बहुत Thank you, Dr. Muhammad Ayub, for informative talk. I would like to call our session chair to present shield, Dr. Muhammad Ayub. क्या क्या हिला है हाँ नहीं फिर एक और बात I would like to call Dr. Amir to present session chair, Dr. Majid Hussain. मैं बोल रही थी This is the time for lunch break. Session will resume at 2 p.m.
भी बनाया से स्टॉल्स की बना इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि हमें हर टाइम जो है वो भी बनाया से स्टॉल्स की बना इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि हमें हर टाइम जो है वो भी बनाया से स्टॉल्स की बना इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि हमें हर टाइम जो है वो भी बनाया से स्टॉल्स की बना इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि हमें हर टाइम जो है वो भी बनाया से स्टॉल्स की बना
सेशन लगाने लगा, पहले वाला बंदा अवेलेबल नहीं है। Welcome back. After the break, I would like to welcome Dr. Amir as the session chair. At our fourth talk, invited talk from Data Dream, Unlocking the Potential of Generative AI with AWS Cloud Computing by Dr. Amir. Dr. Amir is a professor at the Pakistan. Are leading expert in high performance computing and networking. Please welcome Dr. Amir with their Okay, so please be seated. I have a very important topic to discuss. अब बैठने आपको जगह नहीं मिलेगी तो बैठे Right, so the topic of my talk is from data to dreams, unlocking the potential of generating AI in database. इसके अंदर ना 4-5 keywords हैं बड़े important. One, data. The second is dreams. The third one is generative AI, and the fourth one is Amazon Cloud. So I'm going to touch all these topics. So, do you people know कि आप लोग एक दिन में कितना data generate करते हैं? Anyone who does not generate data in like these days? No. So if you are say, using your cell phone or if you are following, so everything is a data point. So today what I'm going to discuss is basically AWS, that is Amazon Cloud, generative AI, some foundation models, and AWS computing, that how these foundation models are to be trained on Amazon Web Services. So this is, so how many of you don't know this person? Raise your hand. And how many of you actually know this person? Okay, so it's like not completely balanced. So this guy's name is Andrew Yang. He's actually Stanford professor. He's a very early adopter and preacher of artificial intelligence. What he says is that artificial intelligence is just like an electricity. जिस तरह एक ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी के आने से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी, इसी तरह एआई के आने से भी अब आपकी पूरी लाइफ ऑलमोस्ट चेंज हो रही है और ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है. So you can imagine the impact कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या कैसे लोग रहते थे और कैसे लाइफस्टाइल has what after electricity. So let me start with the Amazon cloud computing. So Amazon cloud computing is something that has been established in 2006. 2006 के अंदर ये हुआ कि early 90, not in late 1990s, in 99, Amazon actually started their business. जब उनका business start हुआ तो problem उनका ये हुआ कि उनका business इतना successful हुआ, they were very having trouble कि उस website को maintain कैसे करना. यानी आपके पास इतना business आ रहा है, इतनी आपके पास traffic आ रही है, and they were, it was very hard for them to actually handle that. और उसमें होता ये था कि whenever they tried to innovate something, there was a very long cycle. उसमें बहुत देर लगती थी innovate करने. So they started a concept what we call as web services के हम इस तरह करते हैं कि बजाय कि हर वेबसाइट के लिए एक वेब सर्वर लगाया जाए या एक पूरा स्टैक सॉफ्टवेयर स्टैक और हार्डवेयर स्टैक खड़ा किया जाए, हम ये करते हैं दोनों चीजों को डिकवर करते हैं. What we mean by decoupling कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर साइड अलग हो जाएगी और सर्विसेज की साइड अलग हो जाएगी. So if you want to build infrastructure, तो infrastructure already मौजूद है and engineers come to just try to build their services on that. And people really like that idea. Okay, we just need to pay. हमें हर दफा एक कोई परचेज नहीं करनी पड़ती सर्वर की, हमें सिर्फ एक सर्विसेज साइन अप करना है and then we get the access to a web server and we just deploy our code and website. So इसलिए ये हुआ कि early adopters and startups they actually really like that. And then early innovation उसमें ये हुई कि उन्होंने कहा कि okay, you don't pay for the whole server, you pay for only that you use, what we call as a pay as you go on. And then they have a block storage S3, simple storage service S3. They have actually really revolutionized. कि आपको जितनी भी storage चाहिए आपको Amazon से मिल जाएगी. You don't need to worry about your hard disk. And it is kind of a 99.9999 or 6 or 8 9 reliable service. So this was the first one. And then what happened was that Amazon has a global reach.
So it has an exponential growth. People really like that, and it has a global reach. It started from US and Europe, then Asia, and then now it is into more countries. And enterprise really love that. So large corporations, they just move to their operations to AWS. And then beyond infrastructure, AWS is now involved at the artificial intelligence, machine learning analytics, emerging technologies, and becoming a comprehensive cloud platform. And now it is being called as that AWS is no longer a infrastructure company, it's a generative AI company. Why it is called as? Because they are generating huge amount of revenue. So if you look at these cloud providers, so to top the cloud providers, the number one is AWS, they have 22% share. Microsoft Azure is 22%, and Google has 11%. So Gartner है कि एक ना अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं कि who are the top most successful leaders in the cloud computing. So यहाँ फील्ड के बारे में रिपोर्ट जनरेट करते हैं AWS. From the last 12 years, AWS is among those leaders. So that you can see कि market किस तरह इन्होंने capture की. And if you look at these globally, so they have 32 regions. Let me explain कि region क्या होता है. Region AWS की language में ये होता है कि एक geographical area है. Just like for example, let's say Singapore. सिंगापुर के लिए एक रीजन है और सिंगापुर रीजन के अंदर उन्होंने क्या किया होगा कि मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हो गए. दोस अवेलेबिलिटी जोन्स हैव मल्टीपल डेटा सेंटर्स और उन डेटा सेंटर्स के आगे फिर उनके रैक्स और बाकी जो नेटवर्किंग बाकी कंप्यूटिंग खड़ा होगा वो होगा. So currently what we have is 32. ये as of yesterday 32 launch feature है जिसके अंदर मल्टीपल एरिया है. Now multiple availability zones का मतलब ये होता है let's say for example ये region है इसके अंदर uppick आ गया and that region is actually having some loss of connectivity, so they can actually move this to on the other track. और ये multiple data centers का होने की वजह ये कि let's say there is a fire in one data center or there is some another local problem or electricity problem, so we can actually go to the other data center. So this is what we call as the reliability. And then we have 600 plus point of presence in 30 regions. तो ये डाटा सेंटर की एक शक्ल होती है जो हमारे यूटीए में भी अगर आप जाएं तो यहाँ पे टेलीस्कोप वगैरह बने तो उसके पीछे भी हम एक नया डाटा सेंटर लगा रहे हैं. सो सिमिलर देयर आर पॉड्स जहाँ पे इसी तरह के रैक्स लगेंगे. अभी उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है फिर उसके बाद ये सारी चीजें भी आपके पास मिलेंगी. So what do we have in a typical data center is the racks that's like this one. उसके अंदर सर्वर्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, प्रिंटर होते हैं और क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है इसके अंदर बहुत सारी आपकी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है. दे जनरेट लॉट ऑफ हीट और उसको फिर आपको कूलिंग एक सिस्टम चाहिए होता है. एंड देन यू नीड टू फिजिकली सिक्योर इट फिजिकली एज वेल एज एट द सॉफ्टवेयर लेवल एंड देन यू नीड टू डू सम मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन. तो अभी तक तो मैंने अभी चीजें क्लैरिफाई की हैं कि एक क्लाउड के अंदर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. इट इज एक्चुअली दीस मेन कंपोनेंट्स जिसके ऊपर फिर अपनी एप्लीकेशंस आप डिप्लॉय करते हैं. तो Amazon called it के what is the difference between a normal service provider and Amazon is their undifferentiated services. Undifferentiated heavy lifting. Undifferentiating heavy lifting का मतलब ये होता है कि normally what happens is कि अगर तो आप सिर्फ फिजिकल हार्डवेयर रेंट आउट करते हैं क्लाउड के ऊपर तो आप जो AWS का पार्ट है वो AWS ये चार चीजें मेंटेन करेगा. They will install the OS. Let's say आपने कहा मुझे Linux दे दें. Then they will maintain the servers. If the hard drive goes down, they will maintain it. And then the rack, stack, and the power. ये AWS maintain करेगा. And then the rest of the responsibility lies with the customer. बाकी सारी चीजें customer को खुद से करनी है. The other model is what they call is fully managed database service. Fully managed database service means that you have all these things provided by Amazon and you just deploy your app and optimize it. So now look at this. Now for this you need more people to handle that or to run that service. Here you just need to deploy your app and then boom, you can actually get that thing working as quickly as possible. So this is the main concept of AWS that let them do the AWS says that let us do the heavy lifting. ये जो मेजर काम होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भी सारे स्टूडेंट आपको प्रोजेक्ट करना होता है ना हार्डवेयर के प्रोजेक्ट लाना है तो पहले पीसी में सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती है. पहले पीसी को
वो लेके आना पड़ता है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको भी अपना कोड रन होता है ना। बट व्हाट दे आर सेइंग इज कि ये सारे काम करने का फायदा नहीं है, सारा 70% टाइम आपका प्रोजेक्ट का तो उसके लिए लगता है। तो आप उसमें क्या करें, आप इसको सिर्फ रेंट करें, जस्ट आस्क फॉर दीस सर्विसेज एंड देन यू गो फॉर पे as go model and then deploy. So actually there are 6 key pillars from Amazon Web Services. And these pillars are operational excellence, security, reliability, performance efficiency, cost optimization and sustainability. तो जो Amazon का पूरा स्ट्रक्चर है सर्विसेज का, it has all these components involved. तो अगर आप कोई यानी कि let's say if you want to deploy any service, you need to make it secure, and then you need to make it reliable. How you are going to make it secure or reliable? There are firewalls. How you make it reliable? You have redundancy. And then how you make it performance efficient? You need to actually make it closer to the region so that you have a less latency, and then the cost optimization. So you need to, so for example, अगर जैसे आपने कोई सर्विस रन करनी है, you don't need a big server. आपके पास एक छोटे सर्वर से भी काम हो सकता है, एक इंस्टेंस से भी काम हो सकता है, एक कंटेनर से भी काम हो सकता है. So the major चीजें हैं, the services हैं, they are what we call as a compute service, storage, networking, database, and deployment orchestration. And then, as explained, you can deploy them simultaneously in a failover mode in region 1 and region 2, or even region 3, so that you have fully reliable system. Now, for you or the early adopters हैं जिन्होंने पहले AWS को नहीं देखा हुआ, so these are like main building blocks of a large service. जो आपने अभी let's say if you want to deploy, तो normally क्या होता है? So if you let's say अगर आप Uber और Train use करते हैं ना, आपने वहाँ कितने लोगों ने Uber की app use की है, right? So how does that app work? Behind the scene, they don't like it's just not like an app. Behind the scene, they use cloud infrastructure. तो आपकी जो रिक्वेस्ट है ना, वो किसी न किसी उनके स्टोरेज के ऊपर जाती है, जहाँ पे उन्होंने कोई अपना वेब सर्वर होस्ट किया होता है, एंड देन इंटरनली दे गो फॉर देयर एप्लीकेशंस. वहाँ पे उस एप्लीकेशन तक जाने से पहले दे नीड टू डू सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रू दैट, एंड देन दीस आर द एक्चुअल इंस्टेंसेस जहाँ पे वो आपके वेब सर्वर्स लोकेट होते हैं. एंड उसको फिर उसके बाद आपके लेट्स से आपके जो रेट्स आ रहे होते हैं, वो किसी न किसी डेटाबेस में पुट करके देख रहे होते हैं, और कोई ना कोई एल्गोरिथम आपका वो रन करते हैं, और these algorithms run on these databases, and these, in order to make them fast, these databases are actually in-memory databases, what we call as the memcache and elastic cache. And then on this side we have a CloudFront. CloudFront ये होता है कि it makes it easy for you. For example, अगर हम पाकिस्तान में हैं तो हमारे जो nearest जो सर्वर होगा AWS का, वहाँ से हमें सर्व किया जाएगा, बजाय कि हम जैसे the whole request first goes to US or anywhere else. Okay, so this is the first part of the talk in which I have opened up the infrastructure. ठीक है ना? इस infrastructure को दिखाने का मकसद क्या है? इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाने का मकसद ये है कि नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरेटिव एआई की. ठीक है, फिर जनरेटिव एआई की जो डिस्कशन के बाद हम देखेंगे कि जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रेन कैसे होते हैं, बिकॉज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर कॉल्ड एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बिकॉज दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन. तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन आपको कहीं ना कहीं से नहीं है, तो मोस्ट प्रोबब्ली वो यू विल हायर अ क्लाउड फॉर दैट वन, एंड फिर हम पूरी इसी ब्लॉक डायग्राम के ऊपर इन चीजों पे मैप करते हैं. So, how many of you actually use ChatGPT? Gemini, Bard Gemini की चीज है, by the way. Cloud है, किसी ने किया? So आपके ख्याल में कितने ये GPT होंगे इस वक्त? Any idea? पूरा नंबर? No idea. So guess. Oh, more. There are lots of. Actually, what is happening here is, this is a graph. ये graph ना एक ये गार्डनर की रिपोर्ट होती है, ये बताती है कि आपकी जो भी इस वक्त टेक्नोलॉजी 2023 में है ना, उसका हाइप साइकिल क्या है. हाइप साइकिल से बात ये है कि इस वक्त जो पीक हाइप है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है. एंड देन नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि जो हाइप होती है वो आफ्टर सम टाइम इट डाइज डाउन, फिर लोगों को पता लगता है कि
इसके अंदर ये जो हाइट थी, ये ट्रू थी, ये फॉल्स थी, and then you have a plateau of productivity, वो दोबारा शुरू होगा. So what you can see, generative AI is at the top of that. अभी जो इसका जो हाइप है, हाइप साइकिल में it is actually top. Next इसमें इधर कहीं आना है, फिर इसके के वापस आना, ठीक है? So it will take time to become mature, because even you see that all these models are actually they have just started to do some new things. So इसका हुआ क्या? First thing, the war of or the battle of large language models started. So ChatGPT announced ChatGPT, which is OpenAI announced ChatGPT. तो गूगल ने उसके मुकाबले में बार्ड इंट्रोड्यूस कर दिए. उन्होंने बार्ड इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने ChatGPT 4 इंट्रोड्यूस कर दिया. And then it is kind of a war. This is the CEO of Microsoft. He said that Google is the 800 pound gorilla in search, and I want people to know that we made them dance. And that's true. कि जब OpenAI ने ChatGPT announced किया तो Google was actually shaking because they don't have the same kind of a product. And then what happened was that Google they released Bard, and Bard was not performing as good as ChatGPT. So then their market share is slightly dropped. So this is like a new one. Google responded. अभी Gemini की ये है, और they are saying is कि Gemini is the first model to outperform Google its third massive multitask language understanding. यानी कि वो ह्यूमन से भी ऊपर, ये 89.8 जो है, it's a human expert, and they are achieving 90. And what happens if they go to 95 and 99? So that's the kind of future we see. So what are the applications of generative AI? हमने अभी तक जो ChatGPT से आप क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, ये तो क्लियर है. You can actually write code. You can ask code. यदि let's say आपको assignment मिली है, just don't do anything. Just go to the ChatGPT, ask write a code for this in Python, having this kind of input and this kind of. Your code, you just copy it, see some errors. अगर error आता है तो फिर दोबारा ChatGPT को भेज दे. उसका error भी ठीक करो. वो error भी ठीक करते हैं, ठीक है? So the first thing जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा impact होगा वो teachers के है. They have a hard time to do assignments. Assignment कैसे बनाती है? Student जाएगा, वो ChatGPT से पूछेगा, पूछ के आंसर लिख देगा, and then what? Right. So how many of you think कि ChatGPT को allow करना चाहिए studies में? नहीं करना चाहिए. Why? क्यों नहीं करना चाहिए? Give the reason. Any reason? Just speak up. क्यों नहीं करना चाहिए? Right. So you know what happened in, I think exactly year 1980s. The mathematics teachers, they actually protested on the street. And you know why they protested? उन्होंने protest किया कि calculator लागू होनी चाहिए. और the state के लिए ये जो calculator अगर आपने मिलाव कर दिया, तो ये बच्चों की जो calculation करते हैं वो नहीं कर सकते. So just imagine अगर वो calculator लागू किया तो हम क्या करते? This is the point. So I personally think कि जो जितने भी नई technology है, we should adopt them. We should not actually stop it, but we should know कि actually हमने इसको use कैसे करना. Because the same technology is a kind of a double-edged sword. इसको आप positively use कर सकते हैं, इसको आप negatively use कर सकते हैं. So coming back to the applications है, we have a content creation, we can have art and design, music composition, fraud detection, healthcare, some demand forecasting, and there are many applications which we can do with these generative models. So for example, the industrial use cases here, we can use it in AI impacts education and work in the digital age. In the work and education, we should use these generative AI models to improve our efficiency. जो काम आपको let's say 2 घंटे में करना था ना, अब आप उसको 15 मिनट या 10 मिनट में भी कर सकते हैं. Using that same thing if you use it correctly. And then AI in building solutions for people with limited mobility, and generative AI can be used for business growth, for predictive maintenance, and for healthcare, weather forecast, farming and game. So these are just like few examples. So now you remember the title of my talk is From Data to Dreams.
right? So how this data and brief convergence works? On one hand, we have data. The data fuels for creating AI engines. There are vast data, more creative potential for novel discoveries and solutions. पहले जमाने में आपने हम क्या कहते हैं कि अगर let's say if we have a dream, we used to tell dreams. In future, I'm predicting if you have a dream, you will exactly show in a video form that was my dream. तो आप अपने ख्वाब दिखाया नहीं करेंगे, बताया नहीं करेंगे, बल्कि दिखाया करेंगे. And it is right now it's possible, and from every world they can still do some video generated. So how it works, I will come on that one later. So it will unlock the hidden gems within the data. And there are techniques doing that for variation automated code, it's learning the underlying structure of the data for creative exploration. So for deep learning and machine learning, especially deep learning, what it has made, और especially generative AI, ये data के अंदर hidden structures को इस तरह exploit करते हैं कि without giving a label data, it can actually give you more, it can generate some creative things. So you कैसे करते हैं? Technically we have GANs, which actually compares the actual image with the discriminated image, and then we have GPTs, which actually master the language, art of language generation, and then we have relational autoencoders. They learn the underlying structure of the data for creative exploration. So, जब भी generative AI की बात होती है ना, उसमें आपको दो चीजों के नाम सुनने में आएंगे. One is the foundation model, and the other is the LLM. So, what is the difference between foundation model and LLM? I will come back after that one. Let's say कि जो generative AI field है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारा डाटा इकट्ठा करते हैं और उस डाटा को actually we feed to the system and then system actually learns with some mathematical models. उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक foundational model ये होता है कि उसके अंदर सारी information होती है. It is not a particular model. ChatGPT is a foundation model. You can ask for coding, you can ask for let's say slides, you can ask for text generation, whatever you want. It's called as a foundation model. And then we have a large language model, just like GPT, BERT, and Llama. And then we have conversational chatbot. So this is ChatGPT. So behind the scenes, the models are foundation model, language model, और conversational chatbot. तो आप ये भी यूज करते हैं, लेकिन जो मैथमेटिकल मॉडल पीछे यूज करते हैं ना, वो बेसिकली वो जीपीटी होते हैं या llamas होते हैं, BERT होते हैं. Now let's come back to comparing machine with humans. So let's say कि अगर मैं कहूँ किसी एक बंदे को या किसी एक group of people को, can you learn like the whole internet? तो obviously answer is no. Let's say अगर हम general calculation करें कि internet के ऊपर कोई 5.7 billion pages हैं और एक पेज अगर आप पढ़ने में आप 52 सेकंड भी लगाते हैं ना, तो you need like 83,000 hours, which is human life के 41,000 यूज करते हैं. Obviously it's not possible. But the same thing, if you structure the same information in a particular order and you store it, then it can machine, like a group of machines collectively can learn this in some in few months. Still not days, months. So this is the history of GPT, of the foundation models. So what we have in 18 we have BERT and GPT-1, and then we have 2020 we have GPT-3, and then we have 2022 we have ChatGPT, and now we have ChatGPT-4. So and let's say अगर अगले 4-5 सालों में और भी मॉडल आएंगे, वो इससे भी ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग होंगे. Okay, so let's see कि जो generative AI है, I mean I've already explained this. It works as on text, images, audio, synthetic data mining, and it can train on extensive data sets. And generative AI can be used to enhance the customer experience and make them productive. So I've already discussed that. So these are the just conversation models. Conversation model में ये होता है कि आप जब बोल रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी स्पीच को ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम को देते हैं. It will do some kind of a language understanding. उसमें से कुछ language understanding की चीजें निकाल के, then it will the same thing we will get from the text to speech system, and then we actually combine them, and then we try to get some knowledge base and then put it into a database. And that's how we generate. It can be rule based, it can be retrieval based, or it can be rule based. ये होता है कि आप
लेट्स से एक नॉलेज आप बनाते हैं कि जी अगर लेट्स से अगर सिटी लाहौर है, फिर लाहौर के अंदर ये एरिया है, तो फिर उसके अंदर ये चीज है, तो फिर आप मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट? जो रिट्रीवल बेस्ड है, इसके अंदर यू एक्चुअली मेक अ लॉजिक ग्राफ ऑटोमेटिकली एंड देन ड्रॉ फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन. So generative AI means of that it just generates response from itself. This is the ChatGPT interface we have already seen. So for example, you in this case you have asked the ChatGPT what are the use cases of generative AI. तो उसने तो बता दिया कि कौन से use cases है. इस केस में हमने यूज किया कि ओके व्हाट इज जनरेट एन इमेज ऑफ अ क्यूट कैट. उसे क्यूट कैट का इमेज जनरेट किया. दिस इज सिंथेटिक इमेज. दैट कैट डजंट एग्जिस्ट. दिस इज सिंथेटिक इमेज. And similarly, in BARD, you can actually ask some questions. Those questions can be answered. अभी जो latest हमने देखा कि BARD के अंदर they actually give you 3 answers. They don't give you 1 answer. They give you actually 3 answers कि आपको जो पसंद है वो आप उसको choose करना है. And why they are actually giving you 3 answers? Because अगर let's say I like answer number 2, and I spend more time reading that one, then they know okay this one is actually more reliable compared to the other one. So they are actually trying to give you, they are trying to analyze your subjective opinion on that one. And then जो developers हैं वो इन tools को use कर सकते हैं for their developing. Now you just need to actually explain the code in natural language. आप natural language में बताते हैं कि मुझे ये चीजें code generate कर दो, वो code automatically आप generate करते हैं. Just like इसको कहते हैं Copilot. So you just you explain the code in the natural language, you will generate the code. So this is another text to image model which is dlosX. So here I actually gave the prompt and astronaut riding a horse. अब वो astronaut और horse का तो कोई ताल्लुक नहीं बनता ना, but ChatGPT can generate it. It can generate the image getting that your imagination. So you can actually say okay, astronaut riding let's say a horse on Mars. It can actually do that one. Similarly, you can there is another model what we have a stable diffusion. अगर stable diffusion में आप बताएं कि मुझे ये कैसे कॉन्फ़िगर दो और इसमें हुडी करनी हो और ये स्टाइल हो तो actually can generate the same pattern. और similarly what you can do, you can generate your own images. आप अपने किसी भी स्टाइल में इमेज जनरेट कर सकते हैं. आप किसी भी अपनी तस्वीर को अपने किसी उसको सिर्फ लिख के बताएं कि लेट्स से कि आप उससे कहेंगे कि इसको इस इरा का इमेज बना दें. It will actually convert it. But the large language models has some limitations as well. If the limitations can, it's too early. They are in early stage. Actually, I've shown you the hype cycle. Hype cycle मैंने आपको दिखाया ना कि अभी ये लेकिन hype create हुई है. And then it will come down. And then फिर उसके बाद इसकी जो plateau of productivity होगी. So the large language models they have calculated the world with their remarkable ability to generate human quality text, seamlessly translate languages, craft diverse creative content, and thoughtfully answer questions. But problem here is some of the answers may not be correct. And some of the answers may be totally wrong. वो कैसे? एक concept होता है hallucination. Hallucination. These models they hallucinate. आप उसे कहते हैं कि मेरे इस किताब के बाद मेरे बताओ टॉपिक पे 4 किताबें हैं. It can actually generate some fictitious books as well. So don't take that. That's what I said. कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है, you should know very intelligently कि आपने इस tools को कैसे इस्तेमाल करना है. Because sometimes they will give you wrong information and sometimes they will give you totally baseless information. And it also has the problems for real world context की understanding नहीं. जैसे अभी सुबह बात हो रही थी कि इसके अंदर अभी वो जनरेटिव एआई के अंदर अभी अखलाकी बार भी नहीं है. इसको नहीं पता कि ये it's not even it cannot do itself. It can just tell you what it has seen in the data और उसको extract करके दे सकता है. So what is the solution? तो इसमें solution ये है कि इसको retrieval augmented generation use करते हैं, RAG use करते हैं, where we combine information retrieval and text generation. Okay, so now I have shown 2 things. One, AWS. Number 2, generative AI. अभी बीच की बात ऐसे रह गई है कि ये जो मॉडल ये बनता कैसे है और फिर ये जो आपको जो ChatGPT मिला हुआ है इस वक्त ये ट्रेन कैसे किया होगा. So let's see कि ये जो 3 मॉडल्स हैं इस वक्त वो कौन-कौन से हैं.
One is a stability field. It was created in 5 billion images. It has a data of 240 terabytes. It has less than 1 billion parameters. जो parameters होते हैं, ये basically आपके जो deep learning के model होते हैं उसके parameters होते हैं. So they were using 37 P4D instances. Instances कहते हैं जो कि आपके server होते हैं. ठीक है? It took them like 28 days to train. Falcon is another model. They actually took 2 months to train. तो आप imagine कर सकते हैं कि एक cluster है और उसके अंदर बहुत सारी machines है, वो 2 महीने लगातार चलती रही है, and then after that they got some model out. And similarly, Bloomberg ChatGPT, they have like 53 days. Okay, so आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने simulation run की होगी, right? Once you run the simulation, अगर simulation let's say कि एक दिन के बाद break होगी तो फिर क्या होता है? दोबारा से शुरू करते हैं, ऐसे ही है. और अगर let's say कि अगर आपकी simulation 3 days की है और it breaks like after 2.5 days, so what do? You can go again back, right? So now this is a huge thing that अगर आपने कोई चीज 53 days, which is almost like 2 months, अगर चीज का आपने 2 के बाद आपको उसका आंसर आना है, you need to make sure कि that thing does not break within like months. और अगर कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो थ्रू सम चेक पॉइंटिंग और थ्रू सम रीशफलिंग द नंबर. तो जब ये फाउंडेशन मॉडल होते हैं तो हम कहते हैं कि प्री ट्रेन किया जाता है. प्री ट्रेन करने का प्रोसेस क्या होता है कि आप डाटा गैदर करते हैं, you process the data, you optimize your data storage for training, and then you develop some test and training runs scripts, and on some small instances के लिए आप पहले उसका एक सैंपल छोटा सा सैंपल लेके आप उसको ट्रेन करते हैं, स्क्रिप्ट टेस्ट कर लेते हैं, and then you deploy it for over the whole data set, and then you evaluate the model and move back. It's a kind of an iterative process, and after some iteration the model becomes stable. और the life cycle is very होता है कि you pick a base model, foundation model, and then you use some prompt engineering. You आप prompt देते हैं जिसमें for example आप बताते हैं कि नहीं मुझे let's say ये generate करो with some this condition. So this is what we call as the prompt engineering. Then you evaluate your users, store these human responses, preferences. Just like मैंने आपको बताया ना कि बार आपको 3 आंसर देता है तो आप उनसे एक पिक करते हैं, तो जो पिक हो रहा है इसका मतलब इसकी preference ज़्यादा है. And then you fine tune your model and you upgrade your visual foundation model. So these are like its life cycle. तो जो Amazon Web Services के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है in the form of server, वो ट्रेनिंग मशीन है, P4 इंस्टेंसेस है, P3 और DL1 है, ये ML ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं, और ML इंस्टेंसेस के लिए INP2 है, INF2 है, INF1 है, और these are the machines जो आप यूज करते हैं. तो असल चीज देखने वाली है कि वो कितनी उसकी कैपेसिटी कितनी है. तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो उसकी नेटवर्क कैपेसिटी है वो 100 Gbps है, इसकी 400 Gbps है, और इसके अंदर जो लगे हुए हैं 4 टेस्ला के जीपीयू लगे हुए हैं 100 के NVIDIA के, और इसके अंदर 100 के. सो व्हाट यू डू, जब भी आप इसको रेंट करते हैं तो आप इनसे चूज करते हैं कि आपको कौन सी मशीन आपको चाहिए. एंड दीस आर वेरी कॉस्टली मशीन्स, दे चार्ज यू पर आवर और पर सेकंड. एंड जो चैट जीपीटी को ट्रेन करने की कॉस्ट है, इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड, बट उसका जो सीईओ है उसने कहा कि इट्स मोर देन $100 million जस्ट टू ट्रेन द मॉडल. So that's how you train a cluster. तो cluster में ये होता है कि जब आपने एक मॉडल को ट्रेन करना होता है तो ये cluster के अंदर एक मशीन है, उसके अंदर 8 NVIDIA GPU लगे हैं. For example, just look at this one. This one machine has 8 NVIDIA GPUs, और दूसरी मशीन है देखते हैं, and then they communicate with each other for during the model training. जो मॉडल ट्रेनिंग है उसके अंदर होता ही है कि आप मॉडल को अपना मॉडल पैरालेलिज्म यूज करते हैं. मॉडल पैरालेलिज्म 2 तरह की होती है, एक आपकी पाइपलाइन पैरालेलिज्म होती है, एक टेंसर फ्लो पैरालेलिज्म होती है. आप क्या करते हैं, अपने मॉडल की लेयर्स को डिवाइड कर देते हैं. कुछ लेयर्स आपकी एक जीपीयू पे चल रही होती है, कुछ लेयर्स आपकी दूसरे जीपीयू पे चल रही होती है. राइट. तो जो अभी रिसेंटली नवंबर 23 में Amazon का रीइन्वेंट इवेंट था, उसके अंदर उन्होंने 3 नई चीजें इंट्रोड्यूस की हैं. One is the Amazon Nitro 8 compute instances. It was powered by the custom design chips. These instances offer significantly higher performance and lower cost, and then they have their own Graviton 3 ARM CPUs.
Again, they have a 40% better price performance. And then they have AWS Outpost. AWS Outpost अब यूज करते हैं कि Amazon के दो मॉडल्स हैं. Amazon का एक मॉडल ये है कि Amazon का एक मॉडल ये है कि हम सारा का सारा स्टोर कर दें इंफॉर्मेशन Amazon के ऊपर. दूसरा मॉडल Amazon का ये है कि Amazon के इक्विपमेंट आपके प्रीमिसेस पे इंस्टॉल हो जाए, आप उसको यूज कर सकते हैं, बट उसका कंट्रोल आपके पास होता है, लेकिन वो रहता है Amazon की कस्टडी में है. Amazon प्रोवाइड करता है आपकी रिलायबिलिटी उसके ऊपर, जिसको कहते हैं आउटपोस्ट. So they have actually expanded that AWS outpost. And similarly, जो machine learning और AI के tools हैं, one is the SageMaker, Canvas. It's a visual drag and drop. So ये huge model train करने के लिए आपको कोई ज़रा coding नहीं करनी पड़ती. You just use some drag and drop. इतनी machine चाहिए, इतनी core चाहिए, इतनी RAM चाहिए, इतने per machine GPU चाहिए, and then your research engine is ready. And similarly, they have an Amazon Comprehend. Amazon Comprehend we use the sentiment analysis के लिए, topic modeling के लिए और media creation के लिए. और Amazon Forecast है for quantum. It's a forecasting service which uses quantum computing algorithm and it improves the accuracy. Okay, so the last slide is about the sentient AI. The question is, sentient AI का concept किसको आइडिया है sentient AI? Anyone? Sentient का आइडिया ये जो बात है perception, जैसे किसी फीलिंग होती है. Let's say if you feel, as humans we can feel, ठीक है ना? For example, अगर आपको कोई let's say अच्छी बात करते हैं तो आपको खुशी होती है, आप you feel good. अगर let's say कोई आपको डांटता है तो आपको बुरा लगता है ना, ये आपकी फीलिंग है ना. So the ultimate goal of AI is to make this machine sentient. जो अभी यानी कि I don't know it can be achieved or not, only the future will tell. But जो टेक्नोलॉजी की जो चल रहा है ना इस वक्त के लिए, ultimately we need some machines that they can be our friends. They are living with us as just like humans are living with us. So to make them sentient, so only the future will tell that what is going to happen with AI. But let's say अगर ये sentient हो जाती है, will you use it? आप do you guys know कि जापान में उनके पास रोबोट्स हैं, वो उनके घरों में होते हैं और वो उनके घरों में ऐसे ही बैठे रहते हैं जैसे हमारे let's say कि कोई बिल्लियां बैठी जापान में उनके मशीनें रिश्तेदार होती हैं. So in Japan, what they are targeting is society 5.0. Society 5.0 ये है कि हमारी जो उनके यहाँ average age 80-90 plus है, बहुत ऊपर है. So people are quite lonely at that age. So they want to actually have some machines जो कि वो उनके साथ communicate कर सकें. So anyway, that's the ultimate goal for sentient AI. So let me summarize overall my talk. So the main purpose of this talk was to introduce you guys to AWS, know about AWS infrastructure, and then how the LLM bot is on and it's not going to end soon. It has just started. And there's a huge opportunity and excitement in the industry and academia. And I would like you to be an early adopter rather than negative. And you will really get efficient once you use. So I recently did one certification. And amazingly, I mean, it was after a long time I had to sit in an exam. And I can explain you that before one day of the exam, I was confusing lots of things. And I just used to go on ChatGPT and and then after some time, you become really good at that. कि अब आपको वो चीजें ना Google और AI में फर्क ये है ChatGPT में, Google को आप बताते हैं तो वो जो उसको पता होता है वो सिर्फ ये बताता है. इसलिए आप कंपेयर भी करवा सकते हैं. इसको आप कहते हैं कि उससे सवाल पूछे कि मुझे इस तरह बताओ, उसको आप जितना आप उससे अच्छा सवाल पूछेंगे ना, जिसको हम प्रॉम्प्ट नहीं कहते, उतना ही आपको अच्छा जवाब मिलेगा, उतनी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप. लेट्स से अगर आपको चीज नहीं समझ आ रही है, आपको बार-बार पूछे, किसी और एंगल से पूछे, and then you will develop your own understanding. So go and then use this GPT and then ask your teacher those difficult questions. Okay, thank you. If you have any questions, so I'm happy to answer. Questions? मैंने कुछ कॉन्टेक्ट शेयर किया उसको तो फिर हो जाएगा.
They record professor record. मैंने एक पेपर के लिए कुछ चैप्टर्स को किया और इस बार टाइम नहीं था पढ़ने के लिए, तो मैंने उसको कंटेंट दिया और उससे कहा कि जैसे कंटेंट मैंने दिया है आप मुझे इसी के अंदर एक्सप्लेनेशन दो, लेकिन अभी आपने डायरेक्ट बताया कि वो बहुत सारी चीजें अपनी तरह से भी ऐड कर दें। राइट, तो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस ये भी है कि आप नेसेसरी डेडिकेशन दे रहे हैं और जो कि स्पेसिफिक टू दी कंटेंट है उनकी कॉपी राइट्स है, कभी कभी ये आपको उसे डेविएट भी कर देता है और आपको अलग आंसर भी देना शुरू करता है। राइट, सो यू नो द क्वेश्चन इज के ये चैट जीपीटी या कोई भी जो जनरेटिव है ये हमने जो इंटरनेट पे डाटा जनरेट किया होगा उसी को लर्न करता है। तो जो इंटरनेट पे जो डाटा हर तरह का जनरेट हुआ होता है वो सही भी होता है। ओके, तो अच्छी यानी कि एक इन्फॉर्मेशन सही होती है अगर उसने नेट से पिक कर ली है तो व्हाट यू इसमें ना फिर इसको कहते हैं कि नंबर 1 माय सजेशन इज यूज टू generative models simultaneously. I use BARD and GPT simultaneously. एक सवाल इसका पूछा, कोई सवाल उसका पूछा, यहाँ से एक फर्क तय हो जाता है। The second thing what you can do it कि you ask same thing in multiple आपका से change करके पूछे, उसको then you get that one. So असल मतलब ये है कि हमारे पास अब ना information ज़्यादा हो गई है, टाइम कम हो गया, हम अपना टाइम सेव कर रहे हैं ना। अभी अभी let's say कि अगर एक काम में हमें 2 घंटे लगते हैं तो we don't have to ask, we have like minutes, हमने minutes को तो उसको सकते हैं, वो उसके लिए फिर आपको ये कुछ चाहिए, आप यू कैन नॉट अवॉइड दैट। सर मेरा क्वेश्चन ये है और फीडबैक भी है क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने एक्सपीरियंस से बताया कि अभी जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं जिस तरह कैलकुलेटर की आपने एग्जाम्पल बताई, तो कैलकुलेटर को यूज़ करने के बाद बच्चों को की काउंटिंग बहुत वीक हो गई। इस तरह चैट जीपीटी को यूज करते हुए उनका अपना ब्रेन मतलब आर्टिफिशियल ब्रेन तो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और नेचुरल ब्रेन की क्या सूरत होगी इसके बाद, तो ये क्वेश्चन है। वो किसी और काम के लिए यूज होगा। So you have to work creative. Obviously, one dimension is not going to work. Obviously, ये लिखना जो ऐसे कि आपको रटा बना वो निकल जाएगा, अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, just ask। अभी आप देखिए पूछते हैं ना नेक्स्ट क्या होगा, तो इस तरह की चीज होगी, आप उसे बोल के पूछ रहे हो मुझे बताओ ये केस का क्या आंसर है, तो इट विल एक्चुअली टेल यू लाइक ह्यूमन, ठीक है ना, कोई आपके हाथ की चीज आ रही है लेकिन उससे अगली चीज होगी वो आपके दिमाग में कुछ लगा देते हैं। नहीं, लेकिन मसला ये कि इसके जो बैड इफेक्ट हो रहे हैं सोसाइटी के ऊपर, मतलब लोगों की जैसे इंटेलिजेंस जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो वीक होती जा रही है। I don't think it's been bigger. मेरा नहीं था कि वो वीक हो रही है, वो इसको एज अ टूल यूज करता है, नहीं इसको इट्स नॉट समथिंग दैट इज एक्चुअली कोई बिल्कुल ही ऊपर से नाज़िल नहीं हुई चीज, ये जस्ट यूज इट एंड यूज योर ओन ब्रेन कि इस इंफॉर्मेशन को मैंने ये अच्छी लग रही है सही लग रही है, इंटेलिजेंटली यूज करना, यू कैन नॉट बिलीव इट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसका करेक्ट है ना कि डोंट बिलीव इट लाइक। बस मेरा फीडबैक भी यही था जो आपने दे दिया कि मतलब इस पे टोटली रिलाई नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और वो टोटली बेसिकली सिर्फ प्रेजेंस निकालने बाकी थ्योरी से सकते हैं। यूज इट एज हेल्पफुल, just use it as हेल्पफुल। लेकिन अगर पहले आपको किसी दोस्त से पूछना पड़ता था, आपको वो दोस्त नहीं है तो उसे चैट उसे पूछे वो जवाब दे देगा, यू नो टीचर यू आर बीइंग एफिशिएंट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Thank you, Dr. Amrin, for your talk. The title of this talk, Transforming the Future with Artificial Intelligence by Dr. Yasir Ayar. Professor Dr. Yasir Ayar is the Chairman, Central Project Director of National Center of Artificial Intelligence. His Government of Pakistan Technology Initiative AI. He has won Best Paper Award for his work ATC. Please welcome Dr. Yasir Ayar. Assalamu alaikum, everyone. Apologies that I was a little late for my presentation and you had to listen to another talk before mine. It was originally scheduled for 2 p.m. I hope I'm audible for everybody. Yes, you are audible. Please wait. Okay. So the topic of my talk today is transforming the future with artificial intelligence. And as you know, the National Center of Artificial Intelligence is a very applied institution. It's a very applied kind of organization which does practical product-oriented research
sometimes with the industry and sometimes as an industry, while located inside universities, not in one university. And as you can see from the logos on the cover page of my presentation slide, we are actually located in 6 locations, including UET Lahore, UET Peshawar, and UET Karachi, Punjab University Lahore, and also in NUST and ComStats University as well. So to begin with the talk, this is the sequence of the presentation. So I'll tell you a little bit about how AI is, transforming the world and how we are contributing. So a little bit of introduction about myself. So on the right, you see my picture during my PhD years in Japan when I was working on autonomous robots, humanoid robots. So my work was on walking machines, humanoid robots. So since my bachelor's in engineering, I've been designing, building, controlling, and operating the robots in an intelligent manner. So I built completely computer-based intelligent systems as well, but more of my work has been towards embodied AI, which is AI embodied into robotic systems, and they can interact with the environment. They can look at various, like in my PhD years, I was working on obstacle detection, avoidance, path planning, etc., which is mainly search-based AI, but in a more complex real-world setting, where like the robot, there are several unintended movements and several unpredicted probabilistic things happening in the environment as well. So I started the Department of Artificial Intelligence and Robotics at NUST back in the year 2010, where people did not used to talk about AI that much, right? So since that time, I led the department for more than 10 years as the head of department, and then I moved on to the National Center in 2018, which I'll be telling you a little bit more later on during the presentation. I have contributed in the policy making in the, for example, National AI Task Force as its lead, which was initiative of Planning Commission. Then for the Tri-Services Data and Governance Framework, which is from the Joint Services Headquarters, as the Think Future Chair, which is the initiative of the Prime Minister's Office, the Smart Cities Initiative, which was initiated by the President's Office of Pakistan, the AI and Robotics for Industry, which was led by the Ministry of Science and Technology. I was chair for that. National Robotics Mapping, also from the Ministry of Science and Technology, and I am also the deputy chair. Actually, I was elected as the chair of the PCST Technology Transfer Foresight Committee, Technology Foresight Committee for Robotics. But since one of my teachers was also part of the committee, so I requested him to be the chair, and I conducted the activity as lead of the activity, but as the deputy chair of the panel. So this is just a little bit about me, and some of the research which I do in my lab, which I've been doing for the during the department in the past 10 years as well. So these include some of the well-known projects which you may have seen during various presentations, like the one on the left, the RoboCup project. It's a very famous one in which there are 5 robots on one side, 5 robots on the other side. They play soccer autonomously, kind of on edge AI, because the pre-trained model of the environment, for example, about what the robot looks like from different angles, and what the environment looks like, how you place yourself in it, the slam and the swarm and all that. So the multi-agents are trying to play together. So this is all once the training is done, it is deployed on the small AI-based computer which is inside the robot's own body, and the robot is not allowed to connect with any remote server or any remote, even a laptop or a computer which is outside the field of the game. So every agent is an independent recording in progress. It's an independent entity inside the field which is playing soccer on its own, and it's not there is no intervention by any human or any machine from outside the soccer field. So every robot has to play independently, and it has to think as a team. So robots of the same team has to cooperate with each other, and robots of the opponent team have to counter the. So it's kind of an adversarial program at the same time. So similarly, we've worked in rehab. There is work in human-centered robotics, which you see in the topmost robot. So my student who he did this project with me, and then he went to Imperial College. So later on, he's established a company based on this in the UK. So a little advanced version of this robot he's selling in the UK right now. So at the bottom you can see the prosthetic leg. This is one of the tests which we run here in one of the
rehabilitation hospitals, the Armed Forces Institute of Rehabilitation Medicine in Rawalpindi. So similarly, the project on the right top, you see this right now, it's the EG-based steering that it's showing, the brain-based steering of the wheelchair. So this was a conventional joystick-based wheelchair, which is made in Japan, and we collaborated with a Japanese company to make the wheelchair more advanced. Recording stopped. The severely disabled users, right? So we made for that, and below it you can see a soft grasping being done on a small, like this very delicate kind of bottle. And I won basically a Best Paper Award in Sydney, Australia in 2013 for the soft grasping experiments based on the theory that we developed. And then later on for the prosthetics when we were working, so the one on the bottom right, so this is a very integrated kind of prosthetic arm where computer vision and the tactile sensation are integrated into the hand that we have built. And for one particular aspect of this, where we are like estimating how the emotions are conveyed using the positions of the fingers. So we got the Best Paper Award in 2020 in London, in London, UK. I know, I think, in 2020, we got the Best Paper Award in that for this work as well. So we work in several kinds of aspects of AI, which are more oriented towards embodied AI, which is like AI embedded into a physical system rather than AI working standalone on it. So that's my own work, where I come from and how I, landed where I am today. So the setup that I'm currently leading and the research that I'll be talking about will be from this setup. And this setup is the National Center of Artificial Intelligence, which is spread across 6 universities in Pakistan with 9 specialized labs, which are, working on various disciplines like the deep learning laboratory and the Intelligent Field Robotics Laboratory, which are based at NUST, the Medical Imaging and Diagnostics Laboratory, which is based at ComStats University, the Intelligent Systems Design Lab at UET Peshawar, and the Intelligent Information Processing Lab also at UET Peshawar, the Agent-Based Computational Modeling Lab at Punjab University, and the Intelligent Criminology Lab based at UET Lahore, headed by Dr. Usman Ghani and Dr. Waqar as well at KICS. So the Neuromorphic Computation Lab, which is at NED UET Karachi, which is headed by Dr. Saad Qazi there, is a meritorious professor there, and the Smart City Lab, which is headed by Dr. Khurram, who is also, and most of these labs are headed by senior professors of the university. So we have some very capable leadership of the labs, which is actually leading various projects, and you'll see success stories as I'll come to various projects that we've done and how we are bringing about the transformation based on that. On the left, you see various specialized projects that we've been able to do through our research fund, which are like we brought in other universities that were not part of the center, like FAST, for example, like LUMS, for instance, and various other like PF KEET in Karachi. And these are very specialized projects, like like individual project ideas, which the industry was also interested in, which we were able to fund, and they were like worked on by a cluster of teams, including sometimes the teams from NUST labs, so from NCI labs as well, from the industry, like the corporate side as well. Like some companies have also become part of, they have sometimes funded and sometimes directly worked with their teams in the projects as well. And sometimes the universities which were not part of NCI, but they actually joined in. So there are several projects on this side as well. Now, coming to how AI, first of all, is changing the world and why AI is that area. We know that it's a buzzword. We know that you've seen a lot of projects, working on AI, but how big is the scale and why is the scale this big? So when the students go into the market and what to look for when you actually have worked in AI. So the first thing is that artificial intelligence actually, when Medium asked the chief innovation officers of various corporations about the significance of artificial intelligence, why AI is the big area, and like which area actually, which technology they would like to integrate into their country, their company's main mainstream technology. So 72% of the CIOs actually said that AI is that main technology which they want to integrate into their companies. This was followed by IoT, the second one, which is at 46%. So you see a huge gap. So the world is unequivocally focused on this, that AI is the technology direction in which the companies want to orient their products in. They want to orient their entire company's main product line towards AI. And this is the reason why this is the mainstream technology, right? So if you look at the other technologies in the list, for example, IoT gives you a lot of data.
But without AI, what will you use IoT for? So unless those devices which are deployed in the in the human environments are doing something which is intelligent, then what's the use of having the IoT devices? So even IoT, robotic process automation, which is largely basically not something. This is RPA is a terminology used for, like, for example, in call centers or in other areas where a bot actually listens to the call of the user, responds to the call, and fills up a form, for example, based on the query that has been raised. So this is already in operation with several companies in Pakistan too. So this is essentially also AI. Cloud native development has a big component of AI. API brokerage like APG and other systems, they have AI components. Blockchain has huge AI elements, especially in the encryption part. The digital reality is very much AI generated elements are there in digital reality as well. Serverless computing, 3D printing also has some AI based components. So largely, nearly all of these technologies, the emerging technologies, have AI components embedded in them, or they are somehow or the other AI. But if you look at AI itself as well, it is 72, standing at 72. Most of the big innovations like Google, like Facebook, like Instagram, any kind of maps, for example, any kind of online purchases, for instance. So these companies are essentially only AI companies. They don't have anything other than AI. They are AI companies. Like, for example, if you go to online selling and buying, for instance. So how is this different from the selling and buying in a shop? It actually has, customer focused, like based on the interest of the customer, they have the marketing aspect. So integrated into the digital marketing actually. So that concept takes, this kind of provision of product through this kind of services to a different kind of direction of marketing, which is AI. Another thing important which is there to see is that now we talk about the 5 waves of industrial revolution. The industry, we used to talk about industry 4.0, and now industry 5.0 is already there. For the last few months, the world is talking about it. Forbes and a lot of major, themes are basically, major organizations are saying that now the world has entered into industry 5.0, and since 2020, this era has begun. But if you look at the first 2 industrial revolutions, you see that the first industrial revolution spanned from 1800s to the 1900s, when there was mechanization, when there was water and steam powered basically plants. When electricity came and the electric power and assembly line was introduced and the mass production came into play. So from the 1900s to 2000, there is the industry 2.0 era. Some say that industry 2.0 era actually ended in 1985. After which robotics actually started taking over, and the repeatability in the industry, precision manufacturing actually started coming in. But the world as a whole, when it came into the grips of that, the technology started integration in 1985. But when the world actually started really to feel this integration in a massive scale, that's the revolution starting era. So some experts say that you can count that from the year 2000. So from 2000 to the year 2010, this was computers, automated products, electronics, robotics, integrating into the industry and doing repeatable work. And the industry itself was transformed. You walk into an assembly line and you don't see any humans doing anything, only robots doing the manufacturing. So the industry 4.0, which started from 2010, and some people say from 2015, but there are more aspects saying that it started from 2010. So from 2010 onwards, it was the cyber physical systems, IoT, networking, machine learning. But the essence is that this machine learning aspect and this cyber physical systems was aimed towards improving the product quality, right? So the aim was product, improving the quality of the product, improving the supply line, for example. So these things were actually, the basis of this artificial intelligence, which was integrating into the cyberspace and modifying the industry. And now the industry 5.0 concept, the new concept, is a human-centered concept where you like human-robot or human-machine collaboration for complex manufacturing. So one machine is being worked on by a human and by a robot simultaneously. Right? So human-centered systems.
Secondly, the design is taking another form, which is a human-centered design. So now your IoT and your other devices which are being applied into human spaces have a focus on the human being in the center. So human is a very non-linear element. You're not just relying on the data and looking at data alone. You actually look at the human in the center, and then because humans are different from each other, you go to customization. You have some sort of systems which have more complex artificial intelligence capabilities, so cognitive systems coming into play. So this is how now you are talking about a new era which is centered around the humans. So if you look at the statistics, where the world is going with AI right now, so Statistica says that the revenue from artificial intelligence software market worldwide is expected to reach 126 billion by the year 2025. Right? Gartner says that 37% of organizations have already implemented artificial intelligence in some form or the other, and the percentage of the enterprises employing AI has grown 270% over the last 4 years. 270%, it's a massive number. The organizations that are employing AI. So in NASDAQ, this was very famous news, and I think you might have come across this somewhere. The NASDAQ, the NVIDIA stock on NASDAQ has gone up by more than 200% during in 2023 alone, in this 1 year, in 2023, due to the demand for artificial intelligence hardware. So many people are in line to buy the AI hardware. So, when we talk about engineering, for instance, we see that the admissions in engineering, the merit of engineering is in many cases, on the decline. But here you see it is the AI hardware, and it's the stock of the company that is selling this engineering component related to AI is rising by 200%. So why is that not reflecting in our merits? This is something we need to figure out. But, just the supply of the hardware alone, you can see how it is actually transforming, the electronics industry around the world. Then the InfoQ says that the defense spending in AI alone, the defense market on artificial intelligence alone, by the year 2026 is expected to be valued at over $16 billion globally. So that's huge. So AI has applications in virtually every discipline. Defense we just highlighted as one discipline with a compound annual growth rate of around 13.4%, if I'm not wrong. So, but like if you look at every domain, in healthcare, in robotics, in lifestyle, you see that there are fashion designs. For example, in the London Fashion Week, there have been designs, designs of clothes based upon robots, right? They have to actually, they have surfaced, this kind of designs have surfaced as well. So I'll need to speed up the presentation. I can talk about the applications in every one of these domains: chatbots, automobiles, agriculture, and in many cases we have, products related to that. In defense, we see several systems which are based on AI, including the Iron Dome system and several other systems in which AI is now being practically employed. And AI is envisioned to be the third biggest revolutionary power in the defense domain. That's why defense is important to look at here. After gunpowder and nuclear arms, the third biggest revolutionary power in the world is considered as artificial intelligence in the field of defense, with a compound annual growth rate of 13.4%. So if we look at the artificial intelligence global market, its market growth is expected to be 37% every year from the year 2023 to the year 2030. So 37% annually is a huge growth. 15.7 trillion US dollars by the year 2030 is the expected GDP contribution, according to the PwC, which has also been reiterated by Forbes. So AI market size is expected to reach 407 billion by the year 2027, with 133 million new jobs, which will be created by artificial intelligence by the year 2030, as McKinsey and Company say. But McKinsey and Company also warns us that 400 million workers will be displaced because of AI. So this is where we need to reskill our people. This is around 15% of the global workforce. So we have a responsibility as the people who know AI, that we need to reskill our people with artificial intelligence, because a lot of these 400 million workers who will be losing their jobs around the world will be less skilled people or something, many of whom will be coming from our region, right? So this will put a burden on our region as well. So in terms of the applications or products that employ artificial intelligence, we have seen that ChatGPT has been able to outrun almost all the major other companies actually. So
Twitter took 24 months to arrive at 1 million users. Facebook took 10 months. Spotify took 5 months. Instagram 2.5 months, whereas ChatGPT has done that in 5 days. The 1 million users ChatGPT has amassed in just 5 days, right? So this is like a huge kind of transformation, and the acceptability of artificial intelligence in the world is increasing. So I've already briefed you that in Pakistan, the major initiatives, you can say that the dedicated Department of Artificial Intelligence and Robotics was founded in 2010 at NUST, which was actually founded by me. I was the first head of department who established and was running this department. Actually, the first program in AI was the Robotics and Machine Intelligence program, in which there were dedicated subjects to artificial intelligence and machine learning. A whole subject of machine learning were also there. So multiple subjects actually. So this was founded in 2010 and is still running as one of the most, you could say, experienced departments in AI and robotics. And then the National Center of AI has stepped in. We see that the presidential initiative has been a big initiative on AI and computing. Now we look at various universities who have already started to offer AI programs. Motive has, moved to Pakistan, and number of other companies like Kowler and number of other companies have actually, moved to Pakistan to set up their, R&D, to base a lot of major setups in Pakistan because of the talent pool. And the reason is the over 600,000 IT professionals that we currently have, and more than 25,000 fresh graduates that we add to the workforce. The responsibility here on the universities is that we need to actually, put in more and more of human power, and AI-enabled human power in the market. So NCI works on several product domains, some of which are flashed here. I'll quickly flash through some of the products that we have because the time is very limited, as I've been asked to finish in the next 5 minutes. So, this project because a huge component of this comes from UET Lahore actually. So the Safe City project, for example, in the whole Lahore region, Kasoor, this Abdul Kala Shah Kaku area, this has been developed and deployed by UET Lahore lab, the Intelligent Criminology lab under the guidance of Dr. Usman Ghani. So this is a major achievement with face recognition, vehicle recognition, and document recognition and lost and found components as well. So one component running in the whole city normally, and then a more high-speed component dedicated for the events. So this has been designed, and similarly, a Safe City with face recognition, with vehicle recognition, and these features has also been deployed, developed and deployed in Mardan city, which is the second largest city of KPK, by our lab in Peshawar as well. So we work jointly on this, and now we are basically working together, the Peshawar and Lahore labs as well as the center at NUST. We are working together to find others like Safe City customers in other Safe City locations in Pakistan and turn this into a business project. And this also has, of course, paid components and funded components as well. So this is another one in which there is media monitoring, in which, for example, you have the face recognition of the people, the famous personalities who are appearing on TV. Whatever they are saying, or whatever is being spoken is being documented in English and in Urdu, and also whatever is written on the screen. So in any form, it's being documented in real time as well. So this is one of the running products, and it's already been commercialized in the form of a startup company, medium.ai, that is selling it in the market. And for the judiciary, this was a Chief Justice announcement. Actually, we don't have enough time to play this, but actually the system for a smart case search-based system that, for example, which looks through 70 million cases and actually brings up relevant cases for any new case that gets submitted to a court. This has already been developed and handed over to the Supreme Court of Pakistan by NCI. In the medical domain, we have developed several products, including the BrainWiz, for example, which on a completely unseen data set stood third in the world in the BRATS challenge, right? Which is one of the most well-known challenges in machine learning around the world. So this is BrainWiz is one of those with 91% accuracy in skull stripping, tumor classification, whether it's benign or malignant. So this morning there was a famous doctor from US sitting with us, and he was looking at this as well. So we have collaborations with several hospitals. The pulmonary diagnosis system has 98% accuracy, and what's more significant is that this, the black interface, the DICOM viewer that you see, this has been
given to a lot of hospitals in Pakistan free of cost so that they can use this for image tagging. And on the left side of this, you see the interfaces which are related to radiology, which are conventional radiological interfaces. And on the right side, there's a completely different panel which is dedicated for AI. So many people working in medical imaging say they don't have data. Well, we usually don't have shortage of data because we collaborate with many hospitals and we have a good trust level with them, and we provide several things like the DICOM viewers to them as well. So this, the SHEES, for example, this breast cancer detection system also is there. So we have helped the Rawalpindi Medical University and its 4 allied hospitals establish an AI cell, which is being under establishment, and they have now appointed a dedicated director of artificial intelligence as well. So our MOU with them has already been approved by both universities, and just the signing is left. We have good collaboration with Aga Khan University in Karachi, with Shaukat Khanam, Mayo, various hospitals, and several projects are not shown here. We have genetics-based AI-focused projects as well. So the thalassemia project is with Rahman Medical Institute and Khyber Medical University in Peshawar. And similarly, some of these devices, which were for the telemetric or remote, you could say, assessment, the PPG, stethoscopes, ECG, which provide preliminary AI-based assessment as well. They have been deployed in PIMS Hospital in Islamabad and a number of other places as well. So on the right, you see the basically the EEG-based epilepsy predictor. So this is the epilepsy seizure prediction system. It's a wearable device in which the AI algorithm is no longer just on a computer, it's actually now on a chip. So we have first built it on an FPGA, then taped out in the form of a chip, the first tape out and then the second tape out. So this is the second tape out actually. So with a lot of years of research with the research group at LUMS and our team at NCI as well. So the first project was actually pre-NCI that we started working on, in which I was also a part. Our first papers on this are in 2011, I think, and now this product is already done and already prepared. So the next one, why is the slide not changing? So we have done several projects of this kind, including this is a predictive maintenance system for reducing the industry downtime and energy optimization as well. Then we have this another system. This is for defense actually, so it's only the simulation that is shown to you, but it's being made in the real robots as well. So this is the SLAM and SWAM, so single query simultaneous localization and mapping, and also multi-query SWAM algorithms where multiple robots are moving around. Actually, it's not just SWAM; it's a multi-agent, you could say SLAM, right? So for ground robots, it's been done physically on the robots, whereas aerial one has not been done physically, but because of they didn't fund us for that. But we have the algorithm, we have already developed it, so we can do it if somebody asks for it. We have GPS denial-based localization as well. So similarly, this is education-based systems. Some of these have been developed in collaboration of FAST and NUST basically. So HyperHigh is one of the systems that has actually, this is an AI-based online learning platforms, especially aimed towards the schools' children, and it has AI-based predictions of the strengths and weaknesses of the students once they go through lectures and answer questions at various steps. It has been given various awards by USAID, by PASHA, ICT awards, and various others awards as well. So on the right, there's a real-time attentiveness measurement system as well, which is for classrooms for students to give feedback in real time to the teacher about how many students are actually listening to him. So we have spun off 32 startups so far, which are in the market, and we have customers all over the industry that collaborate with us in one way or the other. Most significantly, that Meta, for example, Facebook, they signed up collaborators all over Pakistan. Several universities also are signed up with them, and they signed up collaborators from all over the world actually. So if you look at the main page of Meta AI, so among the 22 main partners that they've listed on their front page, NCI is one of those 22 entities in the world level which are partnering with Meta as their main partner in the 22 partners which are listed on the page. The only other from Pakistan is Pasha, which is the collaboration of all the software houses in the country. So Pasha and NCI are the only two among the 22 main names in the Meta collaboration list that has been basically put on their website. So we offer several trainings to people because this is our responsibility to upgrade the nation and to reskill the workforce which will require training in AI. So the most popular line of training is the bottom one. This is the Certified AI Professional Training. So this is a 4-month course which has 2 days a week class, and actually industry applies to this.
and this is dedicated towards only industry. And this is a registered acronym with the certified AI professional, which is like awarded to the industry after rigorous testing and certification exam. So AI for leaders, last time we organized this, like one batch of this for the military only, and we have done this previously for the civilians as well. So the one for military was limited to brigadier and general level, and we had 21 senior officers attending this. So we offer this to CXO level officers in the industry, and this ranges from 2 days, 3 days to a week based upon what sort of content we are offering. So the center one, this is a specialization course. So these are two types. There are one which is for people who would like to specialize in one form of AI, like data, like deep learning, for example, or data mining, or NLP, or computer vision. So one aspect of AI which they want to specialize in, it is this one. And the other one is towards people who are applied in AI, like medical doctors, for instance, but they don't want to actually program AI on their own. So it is for that. So we organize several major events, and there's a huge national as well as international attendance. You can see that almost all the national leaders, ranging from the president to the ministers, have actually graced our occasion. Last time we held the AI Techverse and ICI together. So the first day, the whole day was reserved only for CEOs, CTOs, and CXOs only for the whole full day. And the next days were, talks by research paper presenters and several research people. And we had attendance from senior level people from UAE, from Saudi Arabia, and there's a lot of interest. So recently, the picture is not here, but we've signed an MOU with the Shanghai Institute of Autonomous Systems, which is based in Shanghai, Silicon Valley. So just recently, I've just come back from China, I think the night before yesterday. So you're welcome to get in touch with me. So this is if you scan this QR code using your camera of your mobile phone, you'll be prompted for a link, and you can click it to go to my link tree, and you can connect with me on almost every social media platform: Facebook, Instagram, LinkedIn, whatever is comfortable for you, or if you want to send an email to me. So feel free to network, feel free to connect, and I apologize that I could not come in person. I really wanted to. So UET is one of my favorite forums to speak at, and I keep visiting it. Dr. Usman, Dr. Vakal, I have very dear relations with both of them, and with several other faculty members at UET. So I wish that I will be able to join in person next time. But for now, it's good to talk to you here online, and all the students, all the professionals, you want to get in touch with us, you can scan here. And I'll end the talk with this note that NCAI is not any one university. NCAI is not just NUST. NCAI is not just UET. We are a national enabler. Our job is to uplift the nation in the field of artificial intelligence. We are not just academia. We are, we are kind of an industry, a research organization very focused towards making applied products. So we feel the pain of the industry as well. So I think that we want all of you to join hands with us, work together with us to transform Pakistan and to enable the country in this, revolution of AI that is coming around the world. And together we can make a difference and, inshallah, take Pakistan forward in the array of the nations and establish ourselves as a digitally enabled, cross-connected, and advanced country which the world can look up to as an example in the field of artificial intelligence. Thank you very much. If there are any questions, I can answer them now. I can't hear that side. Yeah. Okay, so thank you very much for the very informative talk. I really like it. So we have a couple of questions, if you can answer. Yes, okay, please. So the first question is that the National Center of Artificial Intelligence, it was established in, I think, back 3, 4, 5 years ago. So is it like still any phase 2 of this, or I mean, is it like a running thing, or is it like is it a closed thing? No, it's a running thing actually. So National Center of AI, its proposal was approved, and the inauguration ceremony was held in 2018. But the first finances were not released for the whole year, and we actually started working. We actually started working in the summer of 2019.
right? So, and like afterwards, like the fund releases, from the government of Pakistan are not as per the original approval. It depends upon the availability of funds with the government. So still the whole fund release was very recently, I think the last few months, and the labs are still procuring some equipment and doing some work. Still, you have seen that, I haven't shown the numbers here, but we received around 1098 million from the government to establish the center. And we have already done business of around 903 million Pakistan rupees during the time that we've been functioning. So I think that many times over, we have returned the value which actually was entrusted to us if you compare it with other institutions which are established with the same value. So National Center of AI, on a self-sustainability model, so government has supported us recently with an endowment fund, which they will be actually giving over. And with this, we will man the labs, including the lab in UET with some individuals. We'll make a standard structure has also been approved by the government for the, continuing phase of the center. And other centers are also being supported on the same model. So NCRA, NCBC, you have labs of all of them. So the centers are here to stay. Any PSDP project which you establish, it doesn't go away. After the PC1 completion, the universities have to submit reports to the Planning Commission about what sort of activities are going on with the project right now. So National Center is still very much running, and all our offices in all the universities are up and running. And inshallah, we will keep running in the future as well, whether there is another PC1 or not. But we are expecting that now, for instance, when you do safe city projects, so I'll give you example of safe city because UET has done a big chunk of work in this. So 20 billion rupees is the cost of one project for a small or average size city. So this has been done instead of 20 billion, maybe in 20 million rupees or less than that, maybe, by the labs that have actually done this. So if you look at Pakistan, the way AI can hugely help you in cutting down the cost of various of these things. And I think that we need to move now from just the conventional buying and putting in place kind of method in which we just buy the products and deploy it from the foreign country. And for this, we are talking to the government that they need to put NCI in loop for a lot of development projects. So they have to give us, some components of these projects that for digitization and for development of various directions. And from this also we'll generate a funding line, inshallah. Thank you, Dr. Yasir. We are running out of time. I have many questions, but we are running out of time. So thank you very much. The questions, if the audience has some questions, they can also send it to me online on any of the forums. If you've scanned this, you can reach me online as well. So thank you very much again. Thank you very much. Thank you, Dr. Yasir, for your informative talk. I would like to call our session manager, Mr. Farooq Ali, present shield, Dr. Amir Mahmood. I hope this session was engaged for all of you. I want to offer my thanks to session chair, Dr. Amir Mahmood, and all presenters and audience. Thank you.